पे जो बोलती है शान से कि मेरा बेटा रैपर है। कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिसती कॉपी, 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करे जाए में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक ये, मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है, माइक करा लोड फिर रैप पर खट खट ढेड़। शॉर्टकट से मिलती नहीं जीत, मिल भी गई तो फिर मिलती नहीं सीख, मेरे नाम पे इन्हें मिलते हैं व्यूज, ऐसे अल्लाह के नाम पे मिलती है भीख। इस साले पड़ी लकड़ियां लेते, कर्मा चीज तगड़ी है बेटे, इज्जत कमाई है हाथ में नहीं मिली, खैर रात में नहीं मिली, मैंने रगड़ी है बेटे। गूदा है तुझे दुनिया हिलानी है, गूदा चाहिए, गूदा है तुझे नाम बनाना है, गूदा चाहिए, गूदा है कुछ करना है अलग तो गूदा चाहिए, गूदा है तुझ में गूदा है। तूने बोल दिया सबको मैं करूँ काम गलत, तुझे लगा मैं गिरूंगा तेरा अनुमान गलत, तेरे शहर में आ गया मेरे गानों की भाई तेरा हनुमान भगत। लोग सड़ने लगे हैं बेकाम में, क्योंकि असली बॉडी असली व्यूज करा कभी फेक काम नहीं, भाई तेरा ठेठ आदमी हमलू बनता नहीं सेठ आदमी। फोन मेरा छोटा वाला मोटरोला आज भी, टीवी पे जो आया करी दिल्ली वाली बातचीत, कॉल करे लोग मुझे जैसे मुझे 4-20, पूछो मैं नहीं बैठा तो फिर मिलेगा प्रसाद नहीं। जिसने कभी शेयर करे नहीं मेरे गाने आज मुझे मिलने का बहाना बनाते, टॉप पे जो बैठा है इंडस्ट्री में बोला मुझे खुद से उन्होंने आज गाना बनाते, तब जाके लगा मुझे बन गया कुछ, हेट करने वालों को घंटा ना दूं, जहाँ पड़ी जरूरत टेबल और टीमों की भाई तेरा काम सारा कर गया खुद। गाड़ी भगेगी अब ताबड़तोड़, बहुत हार्ड नहीं फुल पावर बोल, सारे लगे अपनी तेईस जमाने में, दुनिया ये सारी मां कंट्रोल। मेरी बुद्धि उल्टी सुल्की हल्की फुल्की, मिनट नहीं लगाऊंगा होने में मैं फिजिकल, रैप के लिए मैंने छोड़ा है सब कोई, बीच में जो आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। सपना ये सोने नहीं देता, बाकी सारे काम मेरे होने नहीं देता, मेहनत चलती है मंगल से सोमवार, जिस दिन मैं जीतूंगा उस दिन मैं सोऊंगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत को संग, ये दिल्ली हरियाणा या सीधा रीढ़ पर पड़ा है घुसंड, हर दिन का बढ़ेगा मेरा दाम, तू गिनता रहेगा मेरा काम, कल को अगर मैं मर भी गया तो भी जिंदा रहेगा मेरा नाम 47 है। याद है मुझे खड़े थे साथ कौन, ज्यादा नहीं बस खाली 6-7 दोस्त, उनमें से भी छोड़ गए एक आध तो, आज मुझे जानते हैं 1 लाख लोग, आधे भाई साहब बने भाई साहब, आधे बोले माई बाप भी और माई बाप, आज सारे सोचे बस मेरी ही भलाई का, बंदिया भी पूछे कि आप खाएंगे मलाई चाप, जिन्हें पहले लगता था करना मैं, पर जब से बड़ी मेरी जनता है, पहले बोलते थे खोल देंगे सर, बोलते हैं सर भोले का फैन तभी बोल मेरे बम, हर रैप सुनने वाला मेरा पंखा, क्योंकि काम तेरे भाई का है ढंका, मेरे आने की तो नौबत नहीं पड़ती, मेरे फैंस ही लगा देते लंका। नाज है मुझे मेरे लड़कों पे, नाज मुझे हर एक फैन पर है, नाज है मुझे मेरी माँ पे जो बोलती है शान से कि मेरा बेटा रैपर है। कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिसती कॉपी, 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करे जाए में डूबे बिस्किट टॉसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक ये, मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है, माइक करा लोड फिर रैप पर खट खट ढेड़। शॉर्टकट से मिलती नहीं जीत, मिल भी गई तो फिर मिलती नहीं सीख, मेरे नाम पे इन्हें मिलते हैं व्यूज, ऐसे अल्लाह के नाम पे मिलती है भीख। इस साले पड़ी लकड़ियां लेते, कर्मा चीज तगड़ी है बेटे, इज्जत कमाई है हाथ में नहीं मिली, खैर रात में नहीं मिली, मैंने रगड़ी है बेटे। गूदा है तुझे दुनिया हिलानी है, गूदा चाहिए, गूदा है तुझे नाम बनाना है, गूदा चाहिए, गूदा है कुछ करना है अलग तो गूदा चाहिए, गूदा है तुझ में गूदा है। तूने बोल दिया सबको मैं करूँ काम गलत, तुझे लगा मैं गिरूंगा तेरा अनुमान गलत, तेरे शहर में आ गया मेरे गानों की भाई तेरा हनुमान भगत। लोग सड़ने लगे हैं बेकाम में, क्योंकि असली बॉडी असली व्यूज करा कभी फेक काम नहीं, भाई तेरा ठेठ आदमी हमलू बनता नहीं सेठ आदमी। फोन मेरा छोटा वाला मोटरोला आज भी, टीवी पे जो आया करी दिल्ली वाली बातचीत, कॉल करे लोग मुझे जैसे मुझे 4-20, पूछो मैं नहीं बैठा तो फिर मिलेगा प्रसाद नहीं। जिसने कभी शेयर करे नहीं मेरे गाने आज मुझे मिलने का बहाना बनाते, टॉप पे जो बैठा है इंडस्ट्री में बोला मुझे खुद से उन्होंने आज गाना बनाते, तब जाके लगा मुझे बन गया कुछ, हेट करने वालों को घंटा ना दूं, जहाँ पड़ी जरूरत टेबल और टीमों की भाई तेरा काम सारा कर गया खुद। गाड़ी भगेगी अब ताबड़तोड़, बहुत हार्ड नहीं फुल पावर बोल, सारे लगे अपनी तेईस जमाने में, दुनिया ये सारी मां कंट्रोल। मेरी बुद्धि उल्टी सुल्की हल्की फुल्की, मिनट नहीं लगाऊंगा होने में मैं फिजिकल, रैप के लिए मैंने छोड़ा है सब कोई, बीच में जो आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। सपना ये सोने नहीं देता, बाकी सारे काम मेरे होने नहीं देता, मेहनत चलती है मंगल से सोमवार, जिस दिन मैं जीतूंगा उस दिन मैं सोऊंगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत को संग, ये दिल्ली हरियाणा या सीधा रीढ़ पर पड़ा है घुसंड, हर दिन का बढ़ेगा मेरा दाम, तू गिनता रहेगा मेरा काम, कल को अगर मैं मर भी गया तो भी जिंदा रहेगा मेरा नाम 47 है। याद है मुझे खड़े थे साथ कौन, ज्यादा नहीं बस खाली 6-7 दोस्त, उनमें से भी छोड़ गए एक आध तो, आज मुझे जानते हैं 1 लाख लोग, आधे भाई साहब बने भाई साहब, आधे बोले माई बाप भी और माई बाप, आज सारे सोचे बस मेरी ही भलाई का, बंदिया भी पूछे कि आप खाएंगे मलाई चाप, जिन्हें पहले लगता था करना मैं, पर जब से बड़ी मेरी जनता है, पहले बोलते थे खोल देंगे सर, बोलते हैं सर भोले का फैन तभी बोल मेरे बम, हर रैप सुनने वाला मेरा पंखा, क्योंकि काम तेरे भाई का है ढंका, मेरे आने की तो नौबत नहीं पड़ती, मेरे फैंस ही लगा देते लंका। नाज है मुझे मेरे लड़कों पे, नाज मुझे हर एक फैन पर है, नाज
नाज है मुझे मेरी माँ पे जो बोलती है शान से कि मेरा बेटा रैपर है। कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करे चाय में डूबे बिस्किट टोसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोग फिर रैप पर खट खट ढेर, शॉर्टकट से मिलती नहीं जीत, मिल भी गई तो फिर मिलती नहीं सीख। मेरे नाम पे इन्हें मिलते हैं व्यूज, ऐसे अल्लाह के नाम पे मिलती है भीख। इस साले पड़ी लकड़ियां लेते, कर्मा चीज तगड़ी है बेटे। इज्जत कमाई है हाथ में नहीं मिली, खैर रात में नहीं मिली, मैंने रगड़ी है बेटे। गूदा है तुझे दुनिया हिलानी है, गूदा चाहिए गूदा है तुझे नाम बनाना है, गूदा चाहिए गूदा है कुछ करना है अलग तो गूदा चाहिए गूदा है तुझ में गूदा है। तूने बोल दिया सबको मैं करूँ काम गलत, तुझे लगा मैं गिरूंगा तेरा अनुमान गलत। तेरे शहर में आ गया मेरे गानों की भाई तेरा हनुमान भगत। लोग सड़ने लगे हैं बेकाम में, क्योंकि असली बॉडी असली व्यूज करा कभी फेक काम नहीं। भाई तेरा ठेठ आदमी हमलू बनता नहीं सेठ आदमी। फोन मेरा छोटा वाला मोटरोला आज भी टीवी पे जो आया करी दिल्ली वाली बातचीत। कॉल करे लोग मुझे जैसे मुझे 4-20, पूजा में नहीं बैठा तो फिर मिलेगा प्रसाद नहीं। जिसने कभी शेयर करे नहीं मेरे गाने आज मुझे मिलने का बहाना बनाते। टॉप पे जो बैठा है इंडस्ट्री में बोला मुझे खुद से उन्होंने आज गाना बनाते। तब जाके लगा मुझे बन गया कुछ, हेट करने वालों को घंटा ना दूं। जहाँ पड़ी जरूरत लेबल और टीमों की भाई तेरा काम सारा कर गया खुद। गाड़ी भगेगी अब ताबड़तोड़, बहुत हार्ड नहीं यही जमाने में दुनिया ये सारी माँ का जोर। मेरी बुद्धि उल्टी सुल्की हल्की फुल्की, मिनट नहीं लगाऊंगा होने में मैं फिजिकल। रैप के लिए मैंने छोड़ा है सब कोई, बीच में जो आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। सपना ये सोने नहीं देता, बाकी सारे काम मेरे होने नहीं देता। मेहनत चलती है मंगल से सोमवार, जिस दिन मैं जीतूंगा उस दिन मैं सोऊंगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, ये दिल्ली हरियाणा या सीधा रीढ़ पर पड़ा है घुसंड। हर दिन का बढ़ेगा मेरा दाम, तू गिनता रहेगा मेरा काम। कल को अगर मैं मर भी गया तो भी जिंदा रहेगा मेरा नाम 47 है। याद है मुझे खड़े थे साथ कौन, ज्यादा नहीं बस खाली 6-7 दोस्त, उनमें से भी छोड़ गए एक आध तो। आज मुझे जानते हैं 1 लाख लोग, आधे भाई साहब बने भाई साहब, आधे बोले माई बाप भी और माई बाप। आज सारे सोचे बस मेरी ही भलाई का, बंदिया भी पूछे कि आप खाएंगे मलाई चाप। जिन्हें पहले लगता था गन्ना में, पर जब से बड़ी मेरी जनता है। पहले बोलते थे खोल देंगे सर, बोलते हैं सर भोले का फैन तभी बोल मेरे बम। हर रैप सुनने वाला मेरा पंखा, क्योंकि काम तेरे भाई का है ढंका। मेरे आने की तो नौबत नहीं पड़ती, मेरे फैन ही लगा देते लंका। नाज है मुझे मेरे लड़कों पे, नाज मुझे हर एक फैन पर है। नाज है मुझे मेरी माँ पे जो बोलती है शान से कि मेरा बेटा रैपर है। कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करे चाय में डूबे बिस्किट टोसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोग फिर रैप पर खट खट ढेर, शॉर्टकट से मिलती नहीं जीत, मिल भी गई तो फिर मिलती नहीं सीख। मेरे नाम पे इन्हें मिलते हैं व्यूज, ऐसे अल्लाह के नाम पे मिलती है भीख। इस साले पड़ी लकड़ियां लेते, कर्मा चीज तगड़ी है बेटे। इज्जत कमाई है हाथ में नहीं मिली, खैर रात में नहीं मिली, मैंने रगड़ी है बेटे। गूदा है तुझे दुनिया हिलानी है, गूदा चाहिए गूदा है तुझे नाम बनाना है, गूदा चाहिए गूदा है कुछ करना है अलग तो गूदा चाहिए गूदा है तुझ में गूदा है। तूने बोल दिया सबको मैं करूँ काम गलत, तुझे लगा मैं गिरूंगा तेरा अनुमान गलत। तेरे शहर में आ गया मेरे गानों की भाई तेरा हनुमान भगत। लोग सड़ने लगे हैं बेकाम में, क्योंकि असली बॉडी असली व्यूज करा कभी फेक काम नहीं। भाई तेरा ठेठ आदमी हमलू बनता नहीं सेठ आदमी। फोन मेरा छोटा वाला मोटरोला आज भी टीवी पे जो आया करी दिल्ली वाली बातचीत। कॉल करे लोग मुझे जैसे मुझे 4-20, पूजा में नहीं बैठा तो फिर मिलेगा प्रसाद नहीं। जिसने कभी शेयर करे नहीं मेरे गाने आज मुझे मिलने का बहाना बनाते। टॉप पे जो बैठा है इंडस्ट्री में बोला मुझे खुद से उन्होंने आज गाना बनाते। तब जाके लगा मुझे बन गया कुछ, हेट करने वालों को घंटा ना दूं। जहाँ पड़ी जरूरत लेबल और टीमों की भाई तेरा काम सारा कर गया खुद। गाड़ी भगेगी अब ताबड़तोड़, बहुत हार्ड नहीं फुल पावर बोल। सारे लगे अपनी यही जमाने में दुनिया ये सारी माँ का जोर। मेरी बुद्धि उल्टी सुल्की हल्की फुल्की, मिनट नहीं लगाऊंगा होने में मैं फिजिकल। रैप के लिए मैंने छोड़ा है सब कोई, बीच में जो आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। सपना ये सोने नहीं देता, बाकी सारे काम मेरे होने नहीं देता। मेहनत चलती है मंगल से सोमवार, जिस दिन मैं जीतूंगा उस दिन मैं सोऊंगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का याद है मुझे खड़े थे साथ कौन, ज्यादा नहीं बस खाली 6-7 दोस्त, उनमें से भी छोड़ गए एक आध तो। आज मुझे जानते हैं 1 लाख लोग, आधे भाई साहब बने भाई साहब, आधे बोले माई बाप भी और माई बाप। आज सारे सोचे बस मेरी ही भलाई का, बंदिया भी पूछे कि आप खाएंगे मलाई चाप। जिन्हें पहले लगता था गन्ना में, पर जब से बड़ी मेरी जनता है। पहले बोलते थे खोल देंगे सर, बोलते हैं सर भोले का फैन तभी बोल मेरे बम। हर रैप सुनने वाला मेरा पंखा, क्योंकि काम तेरे भाई का है ढंका। मेरे आने की तो नौबत नहीं पड़ती, मेरे फैन ही लगा देते लंका। नाज है मुझे मेरे लड़कों पे, नाज मुझे हर एक फैन पर है।
नाज है मुझे मेरी माँ पे जो बोलती है शान से कि मेरा बेटा रैपर है। कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करे जाए में डूबे बिस्किट टोसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोग फिर रैप पर खट खट ढेड़, शॉर्टकट से मिलती नहीं जीत, मिल भी गई तो फिर मिलती नहीं सीख। मेरे नाम पे इन्हें मिलते हैं व्यूज, ऐसे अल्लाह के नाम पे मिलती है भीख। इस साले पड़ी लकड़ियां लेते, कर्मा चीज तगड़ी है बेटे। इज्जत कमाई है हाथ में नहीं मिली, खैर रात में नहीं मिली, मैंने रगड़ी है बेटे। गूदा है तुझे दुनिया हिलानी है, गूदा चाहिए गूदा है तुझे नाम बनाना है, गूदा चाहिए गूदा है कुछ करना है अलग तो गूदा चाहिए गूदा है तुझ में गूदा है। तूने बोल दिया सबको मैं करूँ काम गलत, तुझे लगा मैं गिरूंगा तेरा अनुमान गलत। तेरे शहर में आ गया मेरे गानों की भाई तेरा हनुमान भगत। लोग सड़ने लगे हैं बेकाम में, क्योंकि असली बॉडी असली व्यूज करा कभी फेक काम नहीं। भाई तेरा ठेठ आदमी हमलू बनता नहीं सेठ आदमी। फोन मेरा छोटा वाला मोटोरोला आज भी टीवी पे जो आया करी दिल्ली वाली बातचीत। कॉल करे लोग मुझे जैसे मुझे 4-20, पूजा में नहीं बैठा तो फिर मिलेगा प्रसाद नहीं। जिसने कभी शेयर करे नहीं मेरे गाने आज मुझे मिलने का बहाना बनाते। टॉप पे जो बैठा है इंडस्ट्री में बोला मुझे खुद से उन्होंने आज गाना बनाते। तब जाके लगा मुझे बन गया कुछ, हेट करने वालों को घंटा ना दूं। जहाँ पड़ी जरूरत लेवल और टीमों की भाई तेरा काम सारा कर गया खुद। गाड़ी भगेगी अब ताबड़तोड़, बहुत हार्ड नहीं फुल पावर बोल। सारे लगे अपनी तही जमाने में, दुनिया ये सारी मां कंट्रोल। मेरी बुद्धि उल्टी सुल्की हल्की फुल्की, मिनट नहीं लगाऊंगा होने में मैं फिजिकल। रैप के लिए मैंने छोड़ा है सब कोई, बीच में जो आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। सपना ये सोने नहीं देता, बाकी सारे काम मेरे होने नहीं देता। मेहनत चलती है मंगल से सोमवार, जिस दिन मैं जीतूंगा उस दिन मैं सोऊंगा। जो रही मैं उत्तम प्रकृति का करी सकत को संग। ये दिल्ली हरियाणा या सीधा रीढ़ पर पड़ा है घुसंड। हर दिन का बढ़ेगा मेरा दाम, तू गिनता रहेगा मेरा काम। कल को अगर मैं मर भी गया तो भी जिंदा रहेगा मेरा नाम। 47 है याद है मुझे खड़े थे साथ कौन, ज्यादा नहीं बस खाली 6-7 दोस्त। उनमें से भी छोड़ गए एक आध तो आज मुझे जानते 1 लाख लोग। आधे भाई साहब बने भाई साहब, आधे बोले माई बाप और माई बाप। आज सारे सोचे बस मेरी ही भलाई का। बंदिया भी पूछे कि आप खाएंगे मलाई चाप, जिन्हें पहले लगता था गन्ना में, पर जब से बड़ी मेरी जनता है। पहले बोलते थे खोल देंगे सर, बोलते हैं सर भोले का फैन तभी बोल मेरे बम। हर रैप सुनने वाला मेरा पंखा, क्योंकि काम तेरे भाई का है ढंका। मेरे आने की तो नौबत नहीं पड़ती, मेरे फैंस ही लगा देते लंका। नाज है मुझे मेरे लड़कों पे, नाज मुझे हर एक फैन पर है। नाज है मुझे मेरी माँ पे जो बोलती है शान से कि मेरा बेटा रैपर है। कोई उसकी कॉपी कोई इसकी कॉपी, सब घिसते पेंसिल मैंने घिस दी कॉपी। 10 वाला पेन और 20 की कॉफी, हालत इनकी करे जाए में डूबे बिस्किट टोसी। अभी देखे मुझे भागे रखे सर पर पैर, मुड़ के ना देखेंगे घर तक ये मेरे कागज मेरे शब्दों से लथपथ है। माइक करा लोग फिर रैप पर खट खट ढेड़, शॉर्टकट से मिलती नहीं जीत, मिल भी गई तो फिर मिलती नहीं सीख। मेरे नाम पे इन्हें मिलते हैं व्यूज, ऐसे अल्लाह के नाम पे मिलती है भीख। इस साले पड़ी लकड़ियां लेते, कर्मा चीज तगड़ी है बेटे। इज्जत कमाई है हाथ में नहीं मिली, खैर रात में नहीं मिली, मैंने रगड़ी है बेटे। गूदा है तुझे दुनिया हिलानी है, गूदा चाहिए गूदा है तुझे नाम बनाना है, गूदा चाहिए गूदा है कुछ करना है अलग तो गूदा चाहिए गूदा है तुझ में गूदा है। तूने बोल दिया सबको मैं करूँ काम गलत, तुझे लगा मैं गिरूंगा तेरा अनुमान गलत। तेरे शहर में आ गया मेरे गानों की भाई तेरा हनुमान भगत। लोग सड़ने लगे हैं बेकाम में, क्योंकि असली बॉडी असली व्यूज करा कभी फेक काम नहीं। भाई तेरा ठेठ आदमी हमलू बनता नहीं सेठ आदमी। फोन मेरा छोटा वाला मोटोरोला आज भी। ओके हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू स्ट्रीम। आज हम फिर से लाइव आ गए हैं और खेल रहे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स टेलटेल गेम्स की तरफ से। और ये स्टोरी बेस्ड गेम है। 1 मिनट रुको, हाँ अभी ठीक है। स्टोरी बेस्ड गेम है तुम्हारे लिए। 1 सेकंड, मेरा माउस इतना लैग क्यों रहा है गेम में? वर्ल्ड बैक गेम एकदम से लैग ही हो गई। कोई नहीं, तुम लोग ज्वाइन कर लो। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ गेम को। गाइस 2 मिनट दे दो, रिफ्रेश कर रहा हूँ गेम को। थोड़ी सी लैग हो गई थी इतनी देर से, वो रखा था। ये वॉकिंग डेड के तरह जैसे मतलब स्टोरी बेस्ड गेम होती है, चॉइसेस वाली बेस्ड गेम होती है, वैसी ही गेम है। तो आई होप तुम लोगों को बहुत मज़ा आया इसमें। ठीक है, क्योंकि मैं इस गेम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अभी तुम में से मेरे को पता है इस गेम को ज़्यादा हाइप नहीं मिली थी, तो बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे इस गेम के बारे में। बट दिस गेम इज़ प्रीटी ऑसम। ये अभी भी लैग क्यों हो रही है गेम? आई डोंट नो। एक मिनट रुको,
गाइस 2 मिनट दो। अबे यार ये हर बार का रंडी रोना हो जाता है, मेमोरी यूसेज ज़्यादा हो जाता है। गाइस 2 मिनट दो, अभी चलाते हैं गेम को। चलो अब चल जाएगी गेम। मेरी लैग क्यों हो रही है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। एक सेकंड दे दो गाइस। अच्छा अभी तो एक मिनट रुको बे भाई, एकदम से क्या हो गया यार, इतने नशे मत दो भाई। गाइस सॉरी यार। आई होप गेम सही चल जाए। आई एम जस्ट होपिंग कि गेम तुम्हारी सही चलेगी। कंटिन्यू नहीं करना होगा, चेंज से फाइल। OBS रन एज एडमिन कर, FPS ड्रॉप कम होगा स्ट्रीम का। ओके अबे बट OBS अब मैं रीस्टार्ट करूंगा तो फिर मेरा पूरा वो हो जाएगा ना, स्ट्रीम क्रैश। यार आज रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं किया मैंने। भाई स्ट्रीम क्रैश नहीं हो जाएगी अगर मैं बंद करूंगा इस वाले OBS को?
भाई 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 भाई, अब गेम कैप्चर को नशे हो गए हैं। गेम कैप्चर नहीं चल रहा है सही से। गेम कैप्चर ऑन ही नहीं हो रहा है बहनचोद। वाह भाई, मतलब एक नशे थोड़ना हो रहा है मेरे साथ। पहले गेम लैग हो रही थी, अब गेम नॉर्मल करी तो फिर ये नशे हो गए हैं। गाइस 2 मिनट दो यार, दूसरी स्ट्रीम ऑन करता हूँ। ये वाली ख़राब हो गई है पूरी की पूरी। एक और स्ट्रीम कर रहा हूँ, उसमें आ जाओ जल्दी से, ठीक है? एक और स्ट्रीम ऑन कर रहा हूँ, उसमें आ जाना, ठीक है? प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, फाइनली हम आ गए हैं वापस। आई होप अब चल गई होगी। इसी स्ट्रीम पे ऑन कर दिया क्या इसने? ओके गाइस, इसी पे स्ट्रीम कर रहा हूँ। डिले बहुत ज़्यादा होगा, सॉरी फॉर दैट। आई होप तुम लोग खेल लोगे, मतलब चला लोगे काम। वैसे भी चॉइस तो मैं ही लेने वाला था, तो टाइम होता भी नहीं है। गाइस तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी से। मैं पॉज कर लेता हूँ 2 मिनट। पॉज कर लेते हैं गाइस, 2 मिनट का ब्रेक रख लेता हूँ मैं। जल्दी से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, प्लीज़ ज्वाइन करो जल्दी जल्दी से। इसी में स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यू कर रहा हूँ स्ट्रीम को। गाइस जो जो आ रहा है जल्दी से ज्वाइन करो, और स्ट्रीम को लाइक कर देना। जो भी आ रहा है, नया हो तो सब्सक्राइब करना। सॉरी फॉर द इश्यूज़। एक सेकंड में शेयर भी कर आता हूँ। भाई स्ट्रीम की ना बैंड बजाने में भाई मेरा ना दिमाग सब भाई, ठीक है भाई। चलो गाइस शुरू कर रहा हूँ मैं। जैसे देखने ऑफलाइन देख लेना, या जैसे भी कर लेना। The trout in the towers, the wolves dropped the fish and they all ran away. The trout he flopped on the another wall to pray. Two weddings brought on by beheadings, the knife he cooks for me. Two weddings brought on by beheadings, and all is happily. The great Jamie Lannister, Kingslayer, both breakers, brought to his knees by the men of the North. And set free by the women. You'd think he'd done it himself the way he tells it. Old Forrester's sword won't clean itself, you know. Okay. Make sure it's spotless this time. Old Forrester won't be happy with blood and brain. Now that is a proper sword. I'll have one like it myself someday. You? You'll never have a sword like that. I say that as a friend. Why not? You don't give swords like that to pig farmers. I had Andy. Okay, तो हमारा कैरेक्टर पिक फार्म है। And him what? Capturing him. He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk he barely made it out of his tent. Next he'll tell us he caught Tyrion too. So what really happened? Someone caught him, I suppose. Ask any man here and they'll say it was them. You captured the Kingslayer. Aye. Well, I had a hand in it. Aye. And round his ankle as 10 others took him down. See? What did I tell you? Brought him to his knees. Old Forrester. Not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. It grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. It's your job. Right, thanks. You're welcome. Thank you, Garrett. I'll do it. Norrin's family.
has faithfully served House नहीं हम कर Forrester लेते for हैं, क्या दिक्कत centuries. है? His honor is beyond reproach. House Tully is forever in his debt. They've never seen a field plowed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Fetch your cup. Tonight we celebrate. अरे क्या बात है, हमारे को दारू पीने को मिल गए भाई, पार्ट रहे थे तो। To Rob Stark, the King in the North! ये ना Tomorrow, we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard. Gods and favours! Onward to Casterly Rock! To the Lannisters! मैंने भाई इसके बारे में तो Winter is coming! Let's hope it waits till this bloody war's over. मैंने हमेशा गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में एक चीज जरूर सुनी है, विंटर इज कमिंग, तो Yes, my विंटर lord. इज कमिंग। I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question, what's to be done with you? It's been on my mind for a while now. Something must be done. With me, my lord. You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? What can I offer you? You serve me well. Let me fight for you, my lord. You've more than proven your ability on the battlefield. No man would question that. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Garrett. Your hard work has paid off. Thank you, my lord. I promise. I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go and find Go. Roderick if you can. I will, my lord. बड़ा बोल रहा था मेरे को वो नहीं मिलेगी स्वॉर्ड, मेरे को भी मिलेगी स्वॉर्ड। Squire, fetch us more wine. Can you give me a hand? Come on, make it up to you. Fine, but you owe me. Oh, you? I've been a squire longer than you have. I outrank you. उसने रिक्वेस्ट करी है तो ठीक है, हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं Wine, है। scrub my armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norrin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, liar, and an arrogant prick. It's your job to do. I squire in for Norrin and see how much you like it. See, that's where you're शांत रहना चाहिए था। low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But not by much. This is a job for a pig farmer. बड़ा अच्छा। All I'm saying is, at this rate, we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. All in wine around a fucking wedding. What a waste of fucking time. I'm sick of listening to your whine. With that attitude, you'll never be more than this. Well, easy for you to say. Maybe if my uncle were Castellan, I'd feel different. Who my uncle is has nothing to do with it. How much further? It's right over there. Stronghold of House Ferrer, the Red Wedding. Take your time. You lot have drunk your share. Good thing Lord Walter's in a generous mood. Fucking phrase. Nice night for a wedding.
Not after he finds a willing husband for one of his daughters. Don't expect me to carry it for you, Sir Garrett. What? What's wrong? We have noticed something. Just run into you. You're acting rather odd. You've had too much wine. We need to get back. Now. They're fine, they can wait. No, you don't understand. We need to go. And take the fucking flagon already. What's wrong with him? Something the matter? Owen, we have to go. You go if you're in such a rush. What about? What the hell was that about? Slow down, would you? कोई फायदा What's नहीं the था. rush? There's no need to fucking run. We have to warn the others. Warn them about what? There's no time to explain. We need to find Roderick. He's out there by himself. उसे शायद हम बचा भी नहीं पाते. मतलब वॉर्न करते तो शायद हम पे भी अटैक कर सकते थे वो तभी की तभी. Fuck! We need to get back to camp. अबे कैसे? ओ हेलो. एजी से क्या? एजी से. We have to get back. भाई. अच्छा. Fuck me. भाई सही करा होगा. कुछ आ जाओ क्या आएगा? Ready, boys! Whoa! Shoot that one! ओके बच गए. ये भी ठीक है. अरे स्टार्टिंग में बहुत हंसी था बे. अरे क्या बात है, क्या लड़ाई कर रहा हूँ मैं भाई. क्यों दबा तो रहा हूँ भाई. हेलो. ये लगता है किंग का बेटा रॉडरिक. किंग या जो भी है सेनापति किंग ही होगा. Garrett, did you find Roderick? Speak up, Garrett. Did you see him or not? The Freys. They slaughtered him, my lord. Find a weapon, quickly! यही जो हमारे को फाइट करने को मिलेगा.
time. Seven hells. We have to keep moving, my lord. I'd never make it. They'll hunt us down like dogs. All the races, don't. ओ भाई गलत लेवल घूम जाए तो Guard this with your life. Return it to Ironrath, where it belongs. There's no time to waste. I'll be damned if I let it fall into the hands of those traitors. You have to go. You're welcome to the fucking torch. I will do as you command, my lord. You have served me well. I know I can count on you. जिंदा बचेगा तो याद रखेगा ना Tell your uncle. क्या होता बच भी जाए Tell him. हो सकता है The North Grove must never be lost. Tell no one but him. Do you understand? You must swear. Tell only your Uncle Duncan. The future of the house may depend on it. Tell only the Castellan. Hey, it's those foresters. Oh, Your Honor, you must do this for your house. Go! Kill those fucking foresters. With love. ओ भाई भागना चूते इसकी लाश को वो करेगा क्या बहुत फालतू में वेस्ट मत कर भाई भाग गाइस गेम ऑफ थ्रोन्स का गाना अभी ये कॉपीराइट ना लगना चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक है और आई गेस यही ओरिजिनल है FPS अभी भी कम आ रहा है बट ठीक है ऐसा लग रहा है माइनक्राफ्ट का मैप सॉरी Lord. Fresh. क्या होता है सुअर का दूर प्रॉब्लम ये कैसे पड़ी है इसमें कुछ है क्या लगता तो नहीं है जल्दी जल्दी चल भी सकते हैं चलना लुक कर That's father's car. Wait a second. Lord Bolton better give us fucking titles for this. To maybe come and अच्छा आ गया मेरे को लेने still have his bacon.
भाई इसके फार्म पे है लगता है ये लोग. Move along, boy. There's nothing for you here. Father. I said move on. Unless you want to get fed to the fucking pigs. I recognize you. You're a Forester squire. Former stock bannermen have no claim on land anymore. Or haven't you heard? The Starks are dead. Where'd you get that sword? Not a chance that sword is his. Must have stolen it. Out here by himself. Probably a deserter. None of your fucking business. We're gonna feed you to the fucking pigs. That sword's too big for you, boy. You can barely pick it up. Get off my land! This is Bolton land now, boy. Lord Bolton is the new Warden of the North. I reckon he'd like a proper lordly sword like that. No. I'll have that sword, boy. मार साले को. Fuck you. किसी तरीके की फाइट ऐसे सीधा थोड़ा फाइट में चले जाएंगे भाई. Finish this fucking pig farm. Pathetic. अरे इतनी जल्दी मौत आ जाएगी क्या हमारी? You really are a pig. बचाओ. ओ भाई. बड़ा सही पहला. ऐसे जब शॉट ही तब लड़ लेते. Mercy. Please. I beg of you. I have a family. They'll never survive without me. I have no quarrel with you. साले तू मेरे बाप को मार रहा था तब कुछ नहीं था. Lord Whitefield will see you hang for this. That much I promise. Father? Garrett, you survived. Of course I did. Your sister. Oh, she hid. I tried to stop them. I'll kill the men who did this. It's Garrett! Get the Castellan! Tell him his nephew survived! Garrett! I was too late. They were already dead. Bring the maester. Meet us in the Great Hall. Quickly. Two Whitehill soldiers? And a Bolton.
They killed my family. And for what? गाइस 2 My मिनट sister. दो, पानी भी गया था 2 मिनट में। पानी लेके बैठना चाहिए था। She was only 8 years old. This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Thank you, Maester. The blade cut deep, but I should be able to save your leg. Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. But the Whitehills won't see it that way. It was justice. They got what they deserved. They did indeed. You can't let the Whitehills just walk all over us. These maggots ought to help prevent infection. Hold the wound open for me, would you? भाई साहब, oh my god, हाय These are dark days, I fear. To lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good lord. Well, what do we do now? The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether unprepared to lead. Right. This might hurt a bit. Hold this for me, will you? I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He's as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of warcraft. I imagine I'd be pretty good with a sword. Roderick had a... एक सेकंड दो, एक चीज और कर लेते। already fallen. There was nothing we could do. Although I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house, high or low. Lady Forrester will be here any moment now. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. साले एकदम ठीक हो गए तो बस कीड़े डाल के। Go on. सही है। Don't stop now. It's better to let the blood circulate. ये भी सही है भाई, कीड़े डालो भाई, ठीक हो जाता है पैर। इसी चीज की किसकी जरूरत है? बस लुक किया ऐसे, कुछ बोलेगा नहीं। The Ironwood Grove.
मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स का कुछ भी नहीं देखा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं कि कौन कौन है। इतने सारे तो कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर ही। टच करके देखें, जब पैर में घुसवा सकते तो टच करने में क्या है। Rather cute little creatures, aren't they? ना, क्रीपी है। This might help. You seem to be favoring it. Always sad to see a warrior lose a leg. I'm fine. Mira. Still in King's Landing, I suppose. Although, I wonder if they'll bring her home. Ryan. Never easy being the fourth-born son. Talia and Ethan. I suppose Lord Ethan now. Oh, Ethan, ये बच्चा बना भाई. Asher. Exiled to Essos, unfortunately. Lady Forrester. She's always been kind to me. Treated me like I was a Forrester myself. Lord Forrester. It was an honour to squire for him. Gregor the Good. Roderick. He was our best warrior by far. ये उसका बेटा है जो साला मर गया बेचारा. I may be mistaken. You do seem able to put weight on it. इससे बात करनी क्या, खत्म करनी क्या? It's a good thing you've done, bringing that back to House Forrester. By right, that belongs to Lord Ethan now. That sword has been handed down through 50 generations of Forresters. लौड़ा लेगा मेरा, मैं हटा ना दे रहा. Did your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Who is the new lord of the house? Never mind. Why do the Why do the White Hills hate the Forresters? I think it's safe to say the feeling is mutual. There's been enmity between the two houses for as long as anyone can remember. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someones, and then, well, here we are. Can I go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Lady Forrester. Welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Is it true? Your family... She is into me? I'm so sorry. I mean, Garrett. Me too. Off to वो bed किंग now. की बेटी Hurry है on. और इस तरीके से वेट करना, आई डोंट थिंक सो. नॉर्मल है किसी भी किंग की बेटी के लिए. Garrett was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like He to saved know my life. He was. whatever you can recall. He was a hero, my lady. The bravest man on the battlefield by far. Yet he was unable to save his own son. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion, but if you can remember anything, I'm sure Lady Forrester would like to know. He fought valiantly, my lady. Of course he did. He was House Forrester's best. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed?
if you can remember. It would mean so much to the family. He said he loved you. झूठ बोला but ठीक है. You to say. You have the Forester's sword. This belongs with Ethan now. He's the new lord of the house. Can I keep it? Can I keep it? Can I keep it? Of course. It demands a response. It's too dangerous, especially now. Now is the time to prove our strength. I'll be sure it's given to Ethan. That's the question. Duncan, this was our land. They were our people. Your family. I share your outrage, Sir Royland. I do. But now is not the time to provoke the White Hills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. Hi Eric, क्या हाल है? They're the ones who Welcome should to be the show. demanding retribution. This happened on Forester land. You can't fault the boy for defending himself. Bye. I don't. But What the they'll fuck you? say they were keeping the peace in the name of House Bolton. It's an argument we cannot win. We have to be smart. Ramsay Snow will be here within the week. And what would you have us do? Nothing. I would have us use our heads while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. It was his family they killed. My uncle's right. We need to be smart. Smart. Eddard Stark was smart. And look where that got him. So, what's to be done? एरी स्ट्रीम डिले चल रही है, पहले बता दूं. स्टोरी बेस्ड गेम अगर हो सके तो तू स्टार्टिंग से It will देख be ले. for Lord Ethan to decide. He's just a मन boy करे who तो यहाँ से barely देख hold a सकता है. sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this. I'll accuse you of murder, and us of protecting him. The boy was just defending I himself. have done nothing I'm wrong. not faulting him for what he did. I'd have done the same, as any man would. I've done nothing wrong. Not in their eyes. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take, which is why you cannot stay. Cannot stay. Duncan, the boy has suffered enough. But where would I go? The one place beyond the reach of even House Bolton. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. Okay. I'm afraid it's the only solution. Especially now, when the house is so vulnerable. I'll do what's best for the house. So I'll go. I'm not afraid. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. That settles it then. You can have my horse, and I'll see you have plenty of food. But we haven't much time. The White Hills will come looking for you. क्या जिंदगी रह गई अपनी. पहले वॉर से जैसे से बच के आओ, फिर उसके बाद ट्राइब से Word निकाल up to दिए me. जाओ. I'd gladly drive a sword through Lord Whitehill's heart if given a chance. I would. And God's willing, someday I will. But for now, I have House Forrester to consider first. Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great-uncle was a ranger with the Night's Watch. You're the only family I have left. In my heart, I know I'll see I you will again. not be present for long. Nice. That's good. I've been waiting for the right moment to tell you. What? Not What is it? important message. It's important. Lord Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Sorry, you caught me by surprise. It's not often discussed, if ever. What is the North Grove?
Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. You haven't told anyone else, have you? This is important, Garrett. I need to know the truth. Of course not. I told no one. Well done. Should we choose a Lord choice? Forrester was right. Yes, with ये his choices choosing. वाली game है Walking Dead की तरह. From this day forward, this will be our secret. But soon, I may need your help. But I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Sorry for the delay. बहुत ज़्यादा delay है इसके अंदर. Iron from ice. Iron from ice. Remember, you represent House Forrester. Your actions at the wall will reflect the honor and dignity of the house. I'll make you proud. You already have. ओके हम निकल गए हैं एक जर्नी पे काइंड ऑफ. इस गेम के ग्राफिक्स काफ़ी गंदे हैं, मतलब ठीक ठाक वैसे ही है, ब्लरी से, बट ठीक है जैसे भी है. एक Be safe. शी इज़ डेफिनेटली इनटू ग्रेड. वो क्या नाम है, गैरेट के अंदर. इसको देख के लग ही रहा था कि ये इसे लाइक कर दिया. हाय जोरावर, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. बहुत लेट हो गया यार तुम लोग, सही में. स्टोरी बेस्ड गेम है. मैंने 10-15 मिनट भाई वो भी करा था, क्या कहते हैं, स्टार्टिंग सून लगा के रखा था कि सो दैट कि सारे आ जाएं, और डाल रखा था कि 9:30 बजे शुरू, बट स्टिल यू गाइस आर लेट. ओके तो हमारे को इसमें एक कैरेक्टर नहीं, काफ़ी 2 कैरेक्टर के साथ खेलना है. आई गेस ये पहली गेम होगी जिसके अंदर विंडो रिस्टार्ट इंस्टॉल किया. ओके नाइस. He hides too well, and if he was smart, he would reveal himself. I don't like this game anymore. Maybe something happened to him. Ethan's fine. He's just forgotten this is a game. Ryan, look who we've found. Lol. Don't worry. It's just a game, Ryan. Stupid game. I don't like it. He was worried you were gone. I thought we'd never find you again. I'm right here. And I promise, I'm not going anywhere. I wish Mira was here. And Asher. And Roderick. I do too. But Mira's in King's Landing and... Can't she come home? I don't want her to die too. Ryan, she's Bro, perfectly safe, I promise you. खेलता हूँ जब मेरा गेम प्ले टट्टी हो जाता है. लॉल यार. Last time Tengrin said he got sent to the wall. I'll miss Garrett. He was nice. Garrett is strong. I don't know what he did to get sent away like that. He let me ride one of his pigs once. It was fun. Garrett is strong. He can take care of himself. Window 10 will be No one will tell me what Garrett did, but it must have been serious. भाई वाली बात नहीं I है. heard Duncan and Sir Royland talking. They said someone will come here looking for revenge. Everyone's worried about you, but I'm not. I know you'll protect us. Who मेरे said को पता they're है तेरा worried गेम प्ले about me? सही है. Well, Sir Royland for one. He says you can't fight very well. What? And No, he what calls to you a say. milksop. Sir Royland forgets himself. After all, you are the lord of the house now. I don't care what he says. I can protect you. What does milksop mean? I don't know. But I know it's not good. Ethan, you should let Sir Royland teach you how to wield a sword. Let's see क्या होता है. Like a man. He taught Roderick and Asher, and he even showed me how to fight. Properly, I mean. A lord should know how to fight.
Do you वो remember इस when we were बच्चे के younger? हाथ में अगर We तुम all used to play here. राज्य दे दोगे तो You, me, Roderick, Asher. We'd all be out here for hours. Yeah! Where was I? You weren't born yet. We had so much fun. But then, well, then everything changed. Roderick became so serious, the Lord in training, and he never smiled anymore. And Asher just got angry at everything. Why old games? Why क्योंकि इस गेम की स्टोरी बहुत अच्छी है. Please, just be you. I like you the way you are. I know a lord has many responsibilities, but you don't need to be like them. I may have to change. I'd rather have my brother than a lord. We'll have to have both, I'm afraid. But since you're the new lord, you can do anything you want. वो तो I है. suppose. Everyone will have to do as you say. So I could have all the sweets I want. If only it were that simple. It would be nice if someone did what I wanted for once. That's not how it works. Well, that's how it should work. You are the lord. Lord Ethan, you're needed in the Great Hall at once. Quickly, on your feet. Lol. What's the matter? Seriously. Lord Whitehill has arrived, unannounced and certainly unexpected. He's come demanding justice. Can't he meet with Duncan? He is the Castellan. Stay with us. Please, Ethan. He's demanding an audience with the Lord. We really must go. Of It's your course. decision. You are the lord. If I were lord, I would command Ethan to stay with his family. Fine. If that's what's required of me. Very well then. वैसे मन तो कर रहा था कि ये सब बोल दूँ. The animation is looking like the old Barbie movie. साला 75,000 किस काम के हैं लोग भाई बारबी मूवीज की तरह क्या ही बोलूँ. हाँ थोड़ा बहुत है तो यार सही कह रहा है पर गेम प्ले काफ़ी अच्छा होने वाला है. मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ स्टोरी अच्छी है. इसमें एक्शन वगैरह सब कुछ है. I assume you explained to Lord Ethan why they're here. Business with Garrett. I told him. Lord Whitehill knows Garrett is a squire to this house. Or was, I suppose. Was. It makes no difference. The Whitehills were clearly in the wrong, so don't give him any satisfaction. Out there, you were decisive and firm. Now do it again with these bastards. Let's not do something rash. Things are bad enough as it is. Tell him to go away. I'll throw him out the gate myself if he'd like. Now is not the time to anger Lord Whitehill any more than he already is. He's got 5 times as many men, and the backing of House Bolton. All the more reason to stand up for ourselves. Only cowards and dead men know. लाइफ की जगह रिकॉर्ड कर डाला करो. पता नहीं मेरे को लाइव करना ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू मतलब रिकॉर्ड करने से. Lord Ethan, is it? My condolences for your father and brother. The late Lord Forrester was no friend to me or my house, but to his family it's still a loss. My only regret is I wasn't there to drive the dagger into his heart myself. I've been waiting for this day all my life. The Forresters finally get their due. How dare you? I dare, and I'll do as I damn well please. And no bread and salt! What kind of fucking house receives a lord with no fucking bread and salt? You bloody amateur. No courtesies. I should have expected as much. Bloody Forresters. Calm yourself, old man. You little fuck! That's how you talk to a lord? You Forresters have shit on us for generations. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the north now. Roose Bolton is the Warden of the North. Aye. And we've been his bannermen for 5 fucking centuries, you cunt. Lord Ethan, you're losing control of this. That's enough, Lord Whitehill.
I'm not finished. Maybe if you hadn't been so fucking greedy with the ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. सही Our बोल रहा है share हैरी. was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? रिकॉर्डिंग में बहुत मेहनत है. एक्चुअली दिक्कत है ज़्यादा Your मतलब man, the मेहनत से. squire. We were minding our own business, keeping the king's peace, as his lordship here said, when your man साले. attacked us for no reason. Hear that? Attacked for no He was reason. only defending himself. That's Garrod was only defending himself. Then you admit it was your man who killed my men. And a pig farmer at that. How do you answer for your squire, Lord Ethan? He acted in your name. And you are the lord of this house. Your men attacked and drew first blood. They murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. Soldiers worth 100 of their type. Where's the fucking coward who killed my men? I know he's here. What have you done with we him? haven't seen him. I took care of it. He received his punishment and it's done. He's gone. What? Gone? That was my justice to deliver, boy, and you denied me of it. I'm not leaving until I have my It's justice. his order. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Bolton. हाँ भाई ठीक है भाई. What kind of fucking house is this? भाई एक house of छोटी सी रैम honorable स्टिक men. लगी है भाई जो उसमें भी मार दो भाई चाकू. Lady Forrester. You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady, considering your losses and all. But this is not over. It's over when my son says it is. This is over, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. That lad may be lord of this house, but Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven letting him know a Forrester man killed one of his own, that the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. Do as you like, Lord Whitehill. साइलेंट रहना चाहिए था नहीं. अभी हम पोजीशन में नहीं है इतने कि हैंडल कर सकें इनकी अगर रिग्रेशन वगैरह दिखाया तो. I was wrong about your son, my lady. He stood up to him like a true lord. You were brave, my son. But you'll need to be braver still when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare a raven. We need to send word to Mira in King's Landing at once. Your sister can help us. Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's favor. And Lady Marjorie's betrothal to the king may be enough to keep the Boltons at bay. If it's presented to her as it should be. हम तीसरे करेक्टर पे हैं. ओह माय गॉड. गुस्सा सुक्के का गुस्सा मैं दिखा दिया. सुक्के का मैं गुस्सा मैं दिखा दिया. भाई ये पहली गेम होगी टेलटेल्स की जिसके अंदर हम तीन करेक्टर से खेल रहे हैं. Ethan made this for me. गलती से. Asher sent me this coin to remember him. What a strange place, Essos. ये यहाँ कर क्या रही है मुझे समझ नहीं आ रहा. अगर ये सिस्टर है It was उनकी. very kind of Lady Marjorie to give this to me. It once belonged to Lady Elena. रीड करना. Father, much excitement here in King's Landing for the coming wedding. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. I do wish you and Mother could come, although I know it would be impossible under the circumstances. I miss all of you,
And I look forward to the day you can. ये थोड़ी थोड़ी सेज जैसी नहीं लग रही इसके बाल वगैरह. कोई दूसरी अच्छी ग्राफिक्स हिस्ट्री वाली गेम बताओ. The Telltale removed the Guardians of Galaxy TDGA from Android. ऐसा क्या? शायद एंड्रॉइड से तो सारी गेम्स हटा दी हैं, I guess. Wonders made by man, by Lomas Longstrider. Actually Telltale Games बंद हो गई ना. I hope to see them all someday. It troubles me to even ask this of you, but you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. She is our best hope, and can be a powerful ally, especially now when your family so desperately needs her help. Oh, हम हेल्प मांगने जा रहे हैं अपने है उसके लिए. रामदेव गुप्ता ओपी. रामदेव गुप्ता ओपी. रामदेव भैया, रामदेव गुप्ता. वाह भाई, सही है भाई, ठीक है भाई. हमें रामदेव बना रहे हो क्या तुम? One moment. Oh, sorry, milady. I didn't mean to disturb you. I can come back later if you'd like. No, it's fine. Come in. Begging your pardon, milady, but you all right? आप ही If you don't mind my asking, you seem rather upset. अगदिया. अगदिया क्या होता है? अगदिया क्या है? Sorry, milady. I shouldn't have asked. Okay, bro. Please hurry if you can. Lady Marjorie will be here any minute. Of course. पहले तुमने चॉइस मिस करवा दी. You work for Lady Marjorie? I may be wrong, but it seems like you do. Perhaps you should come back later. Of course, milady. इसके पीछे से बाल तो बिल्कुल सेज जैसे हैं, नहीं? वेलोरेंट की सेज. भाई इसकी शक्ल चिपकली जैसी You're है. early. I was hoping there would be time for us to talk. Come, there's something we must discuss. From the day you arrived in Highgarden, I've thought of you more as a friend than as my handmaiden. A dear friend, in fact. Thank you, my lady. And you know how I feel about what's happened to your family. I feel अच्छा, your pain as वाती. if it were my own. What you've suffered is beyond imagining. You're very kind, my lady. Of course, Mira, but you must not despair. We will get through this together. You must understand there are limits to what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be queen. To have a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark. It raises questions at a time I can least afford. Cersei herself cornered me this morning outside the Royal Sept. She mentioned the northern girl in my service, and she painted you a traitor. She was very pleased with herself. Her face was full of mirth as she said it. I'm not a traitor. Of course not. It's only an excuse to torment you, and by extension, me. She demands an audience. She wants an apology of some sort. For what, I don't know, but she's waiting for us now, and I promised I would bring you to her. I wouldn't ask this of you if it were not important. I cannot afford any conflict with Cersei with the wedding so near. Find a way to appease her. Humor her. Tell her what she wants to hear. See if the Queen Regent is ready to receive us.
You'll be fine. हाँ भाई I ठीक know है you भाई will. डैनी You सही may भाई feel one thing, but you must say another. भाई मेरे को तो छिपकली जैसी Good शक्ल luck. लग रही है जो प्रिंसेस उसके शक्ल से छिपकली जैसी लग रही है चल You ले can do this. पर मैं सॉरी किस चीज़ के लिए कहूँगा अगर मैं ट्रेटर हूँ नहीं तो आई मीन अगर मैं सॉरी कहूँगा तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि मैं ट्रेटर था Ah, Lady Marjorie. Aren't you looking lovely this evening? ये राजा है क्या Your Grace, और ये सारी इसकी वाइफ है भाई with your permission, लकी बोना allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Your Grace. The girl knows her courtesies. Impressive. You may rise. House Forrester is a northern house loyal to the king. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Is your family loyal to the king? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. The one He's not here, is he? She is. The girl can speak for her house. House Forrester's loyalty to the crown never wavers, Your Grace. I see. And yet, for centuries the Forresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. Yes, Your Grace. अरे यार मैंने सुना भी नहीं क्या The Starks were बोला your liege lord, yet you name them traitors so easily. Clearly her loyalty wavers quite a lot. If she has any loyalty at all, is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? He is the Warden of the North, Your Grace. He is. And I the Queen Regent and Tyrion the Master of Coin. The girl has a remarkable talent for answering questions while in fact saying nothing at all. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forrester Ironwood does seem rather unique. Yes, Your Grace. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? भाई इतनी जल्दी Lannister चूज and करने do के लिए whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. I won't dishonor myself, Your Grace. I see. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? I won't judge her, Your Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a delightful girl? If only one could flit through life without ever holding an opinion of their own. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the north, here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours.
Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question. Go on. I would be true to the king, Your Grace. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. My sense is this girl will say almost anything to get what she wants. Which is not very encouraging. सही बात है, वैसे ये तो हमने किया. I'd like a word with you if I may. गलती करी यार, मेरे को इसको चूज करना चाहिए था. आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? BBLLB ब्रो. हक दिया मैं यार वो चीज. I'll walk you out. This may come as a surprise, but I met your father once at the tourney at Lannisport. Even then, he didn't trust Roose Bolton. सही में वाइट हर की तो लग रहा है. But your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. These are trying times, my lord. My family fears what might happen now that the Boltons rule the north. They must still answer to the crown. You shouldn't forget that, nor should they. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Marjorie was humiliated, although Cersei seemed quite pleased. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. No doubt Lady Marjorie will forgive you. Eventually. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the Master of Coin who decides such matters. The crown needs boats. Boats need wood, and I speak for the crown in this regard. Not her. You can help my family. I suppose the crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? It may be far too dangerous. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? I'll consider. ये दोनों भाई बहन हैं भाई, पति पत्नी नहीं थे. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. I hope we meet again. Nothing would make Cersei happier. Until then, be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Mira, I was worried. How was it? Cersei has a way of looking at you. I'd rather not discuss. It's more than a little intimidating. I'd rather not discuss it, if you don't mind. Of course not. It must have been horrible. But at least it's over now. Lady Marjorie has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back, here with the 4th cousins and the 9th-born sons. Sir Jaime, I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah! What? It's true. And Oberyn Martell, the Red Viper. I'm told he has a paramour, which I doubt is Dornish for wife. He is quite पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं quite passionate, from what I've heard. भाई ये रिश्ता कुछ गलत ही कहलाता है. Perhaps Lady Marjorie can make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Although
Marrying a king? I can only imagine what that would be like. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? Nope. He does have a certain look about him, and he's always treated Lady Marjorie well, which is more than you can say for his mother. I'd be willing to marry, but not Joffrey. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as Queen of the Seven Kingdoms. I might even allow you to be my handmaiden. मैं उस दिन 1v1 में कैसे जेट गया मेरा माउस उस दिन हाकर आ था. Marry off. Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match. Sir Bronn and... What are you doing? Well? Sarah? I'm sorry, my lady. As am I. We shouldn't have been messing about. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The Queen was pleased by your display, Mira. I'm just glad it's over. King's Landing can be exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know your true heart, the lords and ladies will have no choice but to love you. Lord, easy. Do you agree? It only matter what you say. It's hard to please them. It doesn't matter what you feel. It only matters what you say. You learn very quickly. Your words to Cersei were brave, but I know you must fear what the Boltons might do to your family. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. There's been something on my mind. Something important. साली आधी बात बोल दी उसके बाद क्या हेल्प लेना I did मांग. have a favor to ask of you in return. Whatever you wish to say, you can say it in front of Sarah. There are no secrets between us. It's about my family. I trust her. I prefer to speak with you alone. Go on. Ask. Forgive me, my lady. I wouldn't otherwise ask this of you, but my mother insisted. It's about my family. Ramsay Snow. What would you have me do? My mother fears our family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. She thought, if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown. I know it's a lot to ask of you, and I wouldn't otherwise, but she insisted. That is no small request, especially now. I know, my lady, and I wouldn't ask this of you otherwise. But my mother has left me no choice. She insisted. Joffrey knows only too well your family fought for the Starks, and now you would have me ask him to intervene. Is the situation that dire? Joffrey will not look favorably on such a request. I can see how important this is to you. I don't know, Mira. If Cersei were to find out... You're the only one who can help me. You have power over him, Lady Marjorie, as no one else does. Not even his mother. Ramsay Snow will arrive at Ironrath within the week. I would never ask this of you if it weren't so urgent.
Very well. I'll make your request, but I cannot promise anything. Thank you, my lady. I will send a raven to my family at once. ओके, हम वापस रेड पे आ गए हैं। क्या नाम था एक रेड? नाम याद करना कितना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। सही है भाई, घोड़ा भाग। 7 hours. Let's play a little game, shall we? Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? साला इसका नसीब भी देखो, ऐसे ही तभी उसी समय देखा है तुमने का। Not my best work, unfortunately. I suppose I have fallen out of practice. But he didn't make it easy. Wanted all that bloody noise. Like a drowning cat. I thought he'd never stop. As my father likes to say, a naked man holds few secrets. But a flayed man holds none. Pity he didn't know your father was the Warden of the North. He does now. How much further is it to these foresters? A day, my lord. 2 at most. What was that? The Lord? अटैक होने वाला फॉरेस्टर्स पे। There. Hear that? लाइट गई। लो सही है I भाई। know I heard something. शायद बच जाऊं। फोन से आया हूँ। Never mind. कोई नहीं, फोन के नेट से देख लो। We've wasted enough time already. वो बच गए, अगर भागते तो दिक्कत में आ जाते। अच्छा एक सेकंड, तो पानी पी के आ रहा हूँ। ठीक, पानी पी के आने दो भाई, कुछ ज़्यादा ही प्यास लग रही है। आता हूँ। पता नहीं इस गेम में मेरा कंट्रोलर क्यों नहीं चल रहा है। कंट्रोलर से एक्चुअली मैं रिलैक्स होकर खेल सकता हूँ ना, वो तो थोड़ा धीरे रहता है। इंस्टाग्राम आईडी mudit.g MUDIT और .g। देखें कौन है। What if Roderick निकले? ओह भाई, चमड़ी उखाड़ दी बे उसकी। बहन चूत भाई, कितना गलत सीन था भाई। Lord Ethan, as I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. But 300 generations of Forester Lords stand behind you.
Eberhard the Tall, who founded our house, and her grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. Thanks, bro. What did they call my father? Lord Gregor the Good. Why He was are you fair, telling me this? wise, I want and courageous in battle. I want to be like that, like my father. Your father was well regarded by nearly everyone. It took years, if not decades, to earn. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel. Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Keep walking, you craven son-in-law. Move! Summon the Lord! We need his judgment. I've done nothing wrong! I was only trying to survive! ओहो थोड़ी अब आ गई ना दादागिरी दिखाने वाले film. Missed. Who is this man? This craven is a deserter and a thief. This house is doomed! We all fucking know it! Quiet, thief. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. 2 shields and 3 spears. Why did you do it? Because I've no wish to die. Yes, my lord, I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks true. Right. I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave the poor man alone! Mercy, go! Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Most of us won't even live to see it. Calm yourself. The time for calm passed with the late Lord Forester. Now there's only chaos. You'll address him as Lord. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it is. Men need to know they cannot do whatever the fuck they please. Their lord will not permit it. You can send him to the wall. ये बात भी सही है. Give us justice. Fuck him! I will decide. Send him to the wall. Take his fingers. Thief. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Please. ये मैं decide करूँगा, ठीक है? My family depends on me. Show him mercy. I sentence you to the wall, where you will join the Night's Watch. Oh, please, my lord! My family, without me, they'll die! उंगली नहीं काटी, मतलब मैंने बैलेंस रखा आई गेस, तो ठीक था. Your house will remember this judgment. That was certainly unpleasant, but a lord must mete out punishment when it's due. Not just yourself, of course. It was my duty, and what? You can weigh on any lord. It's a lord's duty, so I did it. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your side. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom and experience. Who do you think I should choose? There are 2 capable men for the role. They both want the job, but neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you.
Here, the bracer of the Sentinel. The badge of office. Tonight is your first small council meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen Sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Your Sentinel will wear this for all to see. Take it. Thank you for your counsel, Maester. It is my duty. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. It's time to talk and decide. वैसे यह अगर देखा जाए तो इसका जो ग्रेड का एंगल है वो हाउस के लिए अच्छा है. Our provisions are rather low, my lord. I made the count again, just to be sure. But it doesn't look good. Eric said people were going to starve. Why can't we feed them? The war has taken its toll. Even our own stores for the house are dwindling. We couldn't withstand a siege, my lord. If the Boltons or the White Hills cut us off and wait us out, we'd only last a fortnight. But there are steps we can take. In the past, we've demanded food from the small folk to replenish our stores. We can do it again, if you'd like. We've done it before in desperate times. The last long winter, my family had to give all our pigs to the house. I trust you to make the right decision. We'll have to take food from the small folk and hope they can fend for themselves. If the house falls, they'd all be worse for it. I'll see to the arrangements, my lord. Duncan. Yes, my lord. I have much to consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. As Lord, I must name a sentinel. Of course. And if I may ask, who do you favor for the role? Perhaps I can share my insight. And talking can sometimes help you make a decision. 30 FPS game है. Thank you, Duncan. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. भाई 15 तो नहीं है, 30 आ रहे होंगे. 30 से कम तो कुछ नहीं आ रहे होंगे. 30 से तो कम नहीं आ रहे होंगे. I'm so sure about it. अच्छा 30 FPS आ ही रहे होंगे. गाइस क्या लगता है, मतलब डुकन को करना चाहिए या फिर एक मिनट ही कौन है? Ethan. Or should I say Lord Ethan? Hello, Uncle Malcolm. I saw what you did today. It's not an easy thing to do, showing mercy to a man who admits his guilt. But if you'll excuse me, my lord, I should finish packing before nightfall. I hope to be off tomorrow, at first light. Uncle, why are you packing? You're not going somewhere, are you? Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Asher? She has asked me to return with you. He said nothing. वो तो मुझे पता है, मेरी choice है. Fears you will not agree. I told her my place is here, that I'll be of no help to you in Essos. She insisted. I will hold, of course, until you've spoken with her about this. Just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. But you know that just as well. She's my mother. Of course I'll be gentle. I know you will. You're good-hearted, my lord. That is your true strength. But my mother's fears are not the only ones I face. And people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Royland is the man for the job. He'd be a fine choice. And I'd trust him. Why Sir Royland? We are at war. You need a warrior by your side. Royland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice, but now is not the time to negotiate. Not with the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Ethan, I need to talk to you.
Mother told me Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. She always thinks of family above all else. Hopefully Lady Marjorie's influence will be enough. But right now I'm more concerned about you. I saw what you did to that man. I know you told me you'd have to change, but I suppose I hadn't believed you would. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the wall without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to leave. They need me to, but... What? Ethan, please. Tell me. I wish Father were here. Hi, You Ari. do, but Father is gone. You are the lord of this house, which is why you must be strong. You're just as capable as Asher or Roderick ever were. I know it. I only wish you did too. Hi, Fearless. Welcome You've to always given me good advice. Thank you. मतलब एक चीज़ तो इसके अंकल ने काफ़ी क्लियर करी कि या तो हमारे को नेगोशिएशन चाहिए या हमारे को काइंड ऑफ वॉर चाहिए, तो वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. I didn't know dogs could hold swords. A word? Of course, my lord. I have many decisions to make, and I wanted your advice. What's the state of our defences? Are these men ready for what's coming? This lot, ready? No, but they will. We post anyone who can hold a spear along the parapet, up where they won't get much scrutiny, and put our meanest, nastiest looking brutes front and centre. That'll show Ramsay we're a force in our own right. You've got to project power, especially when you're weakened. Thank you, Sir Royland. I'll let you get back to training these men. Thank you, my lord. भाई I'll be sure to watch Fearless out for मैं more उसको सेम ही today. रेट करूँगा, After today, I suspect there'll be more to come. क्योंकि तूने मतलब फर्स्ट वाले से कुछ चेंज नहीं किया. तूने बेसिकली उसमें बस लेयर्स डाली होंगी शायद, या फिर शाइन वेन कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है उस पर इफेक्ट डाले. बेसिकली वो सेम ही है. मैंने तेरे को कहा था कि फॉन्ट बदल और बैकग्राउंड बदल तो वो और अच्छा हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है. भाई तलवार की आवाज़ कहाँ से आ रही है ब्रो? ये लड़ रहे हैं ना ये ऐसे. यार समझ नहीं आ रहा. इसको भी सेंटिनल बना सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं. गाइस क्या करना है यार, नेगोशिएशन या वॉर? वो काइंड ऑफ नेगोशिएशन की तरफ है, मतलब पीसफुल रहने में चाहता है, और वो काइंड ऑफ वॉर करना चाहता है. वैसे मज़ा तो वॉर के अंदर आएगा, बट पीसफुल रहना अच्छा है. वॉर ना, मैं यही सोचा था. चलो. I've decided to name you as my sentinel, Sir Royland. Thank you, my lord. Are you sure? Well, not entirely, I suppose, but I'm still considering you for the job. I see. Well, naming your sentinel is not to be taken lightly, my lord. Of course. अब मैंने ऐसे टुकरा दिया मुंह पे, बोला भाई. Come on, come on, what did I say? Swords up, slash right, parry, again. अबे तो क्या मैं ऐसे दे नहीं सकता क्या? हो गया क्या, इसका कट गया क्या? चलना आगे चलते हैं. मैं इसे दे नहीं सकता. वो फक हक दिया मैं. Duncan, I've decided to name you as my sentinel. Congratulations. Why, thank you, my lord. I'm honored. But are you sure? इसका भी काटते हैं. Yes, of course. Oh fuck! Hello. I'm convinced you're the man for the job. Then I accept. But first, you must summon the small council, my lord, to make it official. Right.
I'll tell Maester Ortengren to do it at once. हक दिया पुन भाई, क्या गंदा हक रहा हूँ मैं, 2 बार हगा। लॉल गाइस, सॉरी, माय बैड। सही में भाई, भाई क्या हगा मैं। Yes, Lord Ethan. I see you've spoken to a number of people. Are you prepared to name your sentinel? ए यार रुक ना, अभी भी कर सकते हैं शायद। I'm not ready just yet. 1 मिनट रुक जाओ, अभी भी Let कर me know सकते when you हैं। are, my lord. अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं शायद। We can fix this. We can fix this. नहीं लॉल भाई, मैं इसका काटने वाला हूँ गाइस, अब मैं इसका काटूंगा, ठीक है। आई गेस मेरे पास ऑप्शन होगा वहाँ पे भी बोलने के लिए कि मैं किसको लेना चाहता हूँ। My lord, are you now ready to name your sentinel? What is it you're doing over here? Admiring the ironwood, my lord. I studied it at the Citadel. The wood may be black, but I see gold. An entire forest of gold. What do you mean? It is our greatest asset, my lord. Why not give some of our ironwood to House Bolton and have them leave us be? We could ransom ourselves. You can hardly put a price on your own life, or the lives of those you love. How much do we have to give, Maester? From here to Wolfswood Creek and then across the next 2 ridges, it should be enough to satisfy Ramsay Snow, I imagine. Bloodlust can often be sated by gifts and gold. My lord, are you now ready to name your sentinel? गाइस मेरे को लगता है उसका काटना चाहिए। Yes, Maester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once. मैं नहीं काटूंगा उसका, मेरी गलती है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, बट अब मैं उसका काट नहीं सकता। मैं काटूंगा भी नहीं उसका। कहीं पता लगे बाद में क्वेश्चन करने लगे, तुमने तो मुझे कहा था। You may sit. I believe Lord Ethan has reached his decision. Before I name my sentinel, I must tell you. Sorrow, pain, regret. You are both worthy. The choice was you. Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Many thought either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. काट दूं? Sir Royland de Gore, you will be my sentinel. Gods be praised. You've done well, Lord Ethan. You won't regret this. A poor choice, my lord. Forgive me for saying so, but it's true. You make a fool of me, my lord. You as much as promised it to me earlier. That's quite enough. The matter is settled. Now, Sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? My scouts say he's a day's ride away. We've no time to waste. He'll arrive before any of our allies could be here. Who knows what he's capable of? We need to prepare for the worst. There's no need to panic. We can devise a plan to deal with him. The Boltons need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here to negotiate. We must answer with the sword. That's bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Quiet, Tuttle. You're not the Sentinel. I knew this would happen. He cannot be trusted. This is the small council, is it not? Lord Ethan should hear from all of us. Let Duncan speak. I'd like to hear what he has to say. Duncan? I'm sorry, Lord Ethan. You have chosen your sentinel. You should hear from him first. एक सेकंड, जोरावर, अगर तेरे को अपना नाम बदलना है, मतलब किस चीज़ का नाम तेरे को अपने चैनल का, ये जैसे जोरावर एक्स चल रहा है तेरा नाम, वो चीज़ बदलनी है, किस चीज़ में, मतलब तेरे को किस तरीके से हेल्प चाहिए वो मुझे बता, मेरे को समझ नहीं आया।
The Bolton sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Put every man who can hold a spear or crossbow on the wall, and make the bastard fill his boots with piss. He would see it for the empty gesture that it is, and have us flayed. We must take a measured approach, my lord. Gentlemen, please. Thank the gods Mira has asked Lady Marjorie for her help. It's not too late for the Crown to intervene on our behalf, but we must have a plan if Mira's efforts are not successful. I trust Mira's judgment. I don't doubt she did everything within her power to help us. Mother, what do you recommend we do? We must give him whatever he wants and be done with it. It's too dangerous to do otherwise. Why not make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the Citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. You must be mad. It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. Enough! Exactly, ये तो बात सही है. Although Sir Royland may object, I shall use diplomacy with Lord Snow. I would be foolish to pick a fight without negotiating first. I'll offer our allegiance and try to reach a reasonable agreement. If you aren't ready for a fight, you're bound to lose when one breaks out. Ethan has made his opinion known, and you will respect his decision. Zorawar देखो Forgive अगर us, अपना my नाम lord. We are, of course, here to serve you, as we served your father. Aye. एक सेकंड. अगर तेरे को अपने चैनल का नाम बदलना है तो तेरे को अपने गूगल वाले से अकाउंट मतलब गूगल पे जाके तेरे को अपने चैनल का नाम बदलना पड़ेगा और उसके बाद ये मतलब ठीक है हो जाएगा बदल जाएगा. यूट्यूब पे भी गूगल पे चेंज करो यहाँ भी बदल जाएगा. Well then, let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. Invite him into this hall and meet him face to face, lord to lord. Ramsay Snow is no lord. That's Say get it. absurd. You meet him at the gate with as much force as we can muster. Make him wait. Let him gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. Lord Ethan? I will meet him at the gate. Very good, my lord. I shall prepare the men. Men? We hardly have any. It's a foolish plan. That's enough from you, Tuttle. Lord Ethan has spoken. Obey his command. I've faithfully served this house for far too long to sit here and listen to this. Forgive me, my lord, but you are far too young to be the lord of this house. You're likely to get us all killed. Apologies, my son. But now that it is settled, we know what we must do. You will meet Ramsay Snow at the gate, and we will not offer our ironwood. No matter what, I will stand beside you, my lord, where your sentinel belongs. Then perhaps we should adjourn. We have to prepare the house. Sentinel रख ले. My lord, you have named your sentinel, but you still seem conflicted. And no matter what, you can't be indecisive. Not if you want to help this house. Forgive me. There will always be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Family. Mira has done everything she can in King's Landing, but there are others who can help us. What about your brother, Asher? Malcolm told me. You want to bring him back. He's a skilled fighter. But what's more, he has the will to fight. A hunger for it. He always protected you and your sister. And we need all the help we can get. Yes, I hear what you're saying. Do you remember the miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. But when Asher saw it, he didn't take a breath. He grabbed the miller's boy by the neck. That was his first instinct. Asher knocked out half the poor boy's teeth. Of
course, your father was furious, but you were in danger and there was nothing else Asher needed to know. Asher does not hesitate. He acts, and we need that. You have many fine qualities, but you do not have that anger inside you. Asher is dangerous and unpredictable. His presence could help or hurt. Having another sword at your side always helps, especially now. ऐशर बड़ा सही सा लग रहा है बंदा, सही है, फाइट करता होगा बट I'm trying to do what's best for this family, what this family needs. Ethan, let me send Malcolm to Essos. Fine. Malcolm will go to Essos and bring Asher back. Thank you, Ethan. ऐसा ही तो नाम है, सेंटिनल। वैसे जोरावर में क्या दिक्कत है? You are a forester. Mira stands with us, and she may be able to help us yet. मेरे को तो जोरावर में कोई दिक्कत नहीं लगती। जोरावर इज अ गुड नेम। यार बंद करेंगे बस यहाँ तक, मेरा हो गया है, पता है मैं थक गया हूँ मतलब। ओके गाइस, इस स्ट्रीम को इतना ही रखते हैं, मतलब इस गेम को इतना ही रखते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, मेरा मन भर गया है अभी इस गेम से, अभी काफ़ी देर खेल लिया, मैं इससे ज़्यादा स्टोरी नहीं देखना चाहता। आई गेस एपिसोड ख़त्म होने वाला होगा, तो अगली स्ट्रीम में हम इसे कर लेंगे एपिसोड को ख़त्म। यूट्यूबर इज ऑल्सो नेम्स सेंडार्गो। बाय। अरे बाय नहीं भाई, कल कितने बजे? सेम बजे होगी, और वैलोरेंट खेलने जा रहा हूँ मैं अभी। पीस आउट नहीं भाई, अभी वैलोरेंट खेलते हैं ना, क्या दिक्कत है? तुम लोग बैठे हुए हो ना? मेरा भी मूड बंद नहीं है, बंद करने का नहीं है स्ट्रीम, बट मेरा इस गेम से हो गया वीकले, तो ठीक है। एक सेकेंड, हाँ वैलो खेलूंगा ना। प्ले अमंग अस। अमंग अस एक अलग गेम है या वुल्फ अमंग अस, या मतलब वो वाली जो वुल्फ अमंग अस करके ना टेलटेल्स की? अमंग अस मैंने बताया, सुना है कि अमंग अस एक अलग गेम है ना। एक्चुअली मेरे उस पे है, क्या कहते हैं, डिस्कॉर्ड पे एक लड़की है, वो खेलती है। मैं उस लड़की को सही से जानता भी नहीं हूँ, बट ठीक है। एनीवेज, हुज द इम्पोस्टर, पता नहीं भाई क्या है इस गेम में, मुझे समझ नहीं आ रहा। मंगस मैंने अभी देखा थोड़ा बहुत, बाद में सही से देखना पड़ेगा लगता है। ओह, राका स्ट्रीम कर रहा है। अच्छा, हाँ वही मेरे को लग रहा था कि कोई ऑनलाइन गेम है, बट मेरे को देखना पड़ेगा कैसी गेम है, क्या गेम है। आई डोंट थिंक सो कि लोग देखने आएंगे, उनको पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा। निक्सो, निक्सो वीसी है ना गाइस? निक्सो मिल गया भाई, आज तो बकचोदी होगी। एक मिनट, लाइव नाउ पे चलते हैं। इधर ऊपर क्या को आ गया? अरे लाइव नाउ में बैठेंगे, लाइव कर रहे हैं भाई, लाइव पे बैठेंगे। आज भी बकचोदी करनी है, फिर कॉम्पी खेलना है? सीरियस क्या? आज भी बकचोदी करनी है, फिर कॉम्पी खेलना है? कॉम्पी की हालत में नहीं है, दुकान हो रखा है। तो चलो बकचोदी कर लेते हैं आज भी। अच्छा वेलो का मैं वो तो कर लूँगा इस ऑन, सॉरी माय बैड। ग्रूट वगैरह का 8-10 चल रहा है। ग्रूट कॉम्पी खेल रहा है, 8-10 चल रहा है।
पहले तो 7-10 था भी लगता अरे था। आज ओमन से तेरा भाई क्या खेला, मजा आ गया, मजे फाड़ दिए भाई ने। अबे आज स्टेज से कैरी किया वे, इसके बादल में से क्या पिटाया भाई, भाई क्या मैं पिटाया पता कितना खेलते हैं मेरे 25-60। रायन 34 बहुत वाली वीडियो कब आएगी? रायन भूत वाली, अरे यार वो पता है वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा तब से। मैं ट्राई किया था बट वो हो नहीं रहा था, अब कल परसों में करके देखता हूँ। उसके पूरे हाइलाइट्स बनाने पड़ेंगे भाई, एक रायन का ही सीन नहीं बना सकता ना, वो बहुत छोटा सीन हो जाएगा क्योंकि हमने छोटा सा ही करा था। अरे वो रायन वाला उसे हमने जब बकचोदी करी थी। रायन वाला रायना वाला अच्छा रायना को जब भूतनी बनाया था, तुझे पंडित बना दिया था। आज सोचा व्लॉगिंग करूं भाई। व्लॉगिंग मतलब व्लॉगिंग करते हैं आज। वो सॉरी 23-9 का स्कोर था ये वाला मैच एमवीपी में। भाई क्या खेला था, मेरे को नहीं दिख रहा तेरा। हाँ अच्छा वो अनरैंक खेला था, ओके अनरेटेड है। अनरेटेड में अबे कॉम्पी में मेरा तो बट जीत गया। मेरा कैरेक्टर चेक करना, कॉम्पी में 34-6, उसके बाद वाला मैच में रीना से क्या पिटा हूं। ओ भाई 34-6 वाडू है, क्या करके आया था भाई? अरे बंदे बुरे नहीं थे। मैच फाउंड। अबे मेरा ओवन क्या पता क्या चक्कर हुआ, मैं भाई स्मोक कर रहा हूँ, मैं उनके लिए वो ब्लाइंड कर रहा हूँ, वो लोग मार पा रहे थे, मैं मार ही नहीं पा रहा था। मैं जब तक मारता उतने में साला मैं मर जाता, वो साले मेरे ब्लाइंड का फायदा उठा रहे थे भाई। मतलब कंट्रोलर का वही डिसएडवांटेज है। अगर तू आगे कभी हमारे साथ भी करो बकचोदी। अबे तो आ जाओ ना, अभी आ जाओ। आ तो सही जोरावर अभी आ जा, तू बोल तू वेटिंग लॉबी में आ जा, तो मैं तेरे को ड्रैग कर लूंगा। अपन मैं सिलेक्ट ही नहीं करूंगा, 2 मिनट का ही लगेगा, कोई नहीं 9 मिनट का। भाई 9 मिनट से ज्यादा का लग जाएगा भाई, चूतियागिरी मत कर। तब पता लगे 2 घंटे का लग गया। अभी नहीं, कल भाई कल आएगा, छोड़ शुरू कर, कल लगेगा भाई। सेंटिनल एक ही है ना, एक मिनट वो चूज करना। किलजॉय का देखना था, किलजॉय का क्या है? नहीं मेरे पे किलजॉय, तेरा किलजॉय नहीं है। वी आर एन एलियन रेस, वी हैव अ स्पेसशिप एंड इन आवर ग्रुप देयर इज एन इम्पोस्टर। धोखेबाज, ओके वाह, मेरे को तो पता ही नहीं था इम्पोस्टर का मतलब। He can kill us all, so we have to eliminate by reporting the dead body and chat others who is it and vote. ये किसका पढ़ रहा है भाई? क्या है ये? वही क्या है, क्या ये चैट है भाई? चैट पे किसी ने लिखा व्हाट द फक इज दिस? कौन आ गया भाई? एलियन नासा को खबर करो, एफबीआई बुलाओ। वही तो वही क्या है और क्या गाने चल रहे हैं टट्टी टट्टी से? मेरे गाने क्यों बंद हो गए? अच्छा मंगस का है क्या? Think you can keep up? ओके ट्राई भाई देखूंगा, मेरे को समझ नहीं आ रही ऐसी गेम ना, ऐसे समझ नहीं आ रही, मेरे को देखना पड़ेगा एक बार पूरा खोल के। अरे गेम प्ले साले खोल के समझिए, वो ठीक है। ओके गाइस, आज हम आ गए हैं एसेंट के अंदर और आज मैं अपना पहला व्लॉग अपलोड करने वाला हूँ। आज हम ओवन के कपड़े पहन गए हैं, भूतिया से कपड़े हैं थोड़े से। अबे मेरा वी क्यों नहीं चल रहा है? हेलो हम यहाँ नर्स बन चुके हैं। अबे मेरा वी क्यों नहीं चल रहा है? चल तो रहा है, मेरे को दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है, मेरे को आवाज भी नहीं आ रही। किसी ने कुछ बोला था यहाँ पे, वो क्लच करिए कुछ, किसी ने कुछ बोला। हेलो कोई कुछ बोला था क्या? अरे थोड़ा तेज करो अपने आप अपनी ज़बान को। गाइस हमारे साथ पता नहीं कोई आदमी है, बोलने की कोशिश कर रहा है बट आवाज़ नहीं आ रही है उनकी। लौंडे बे हो गया। ओ भाई दूसरा भी आ गया। बैक द फक अप। भाई 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 मेरे पे पूरे भरे भरे भाई, भाग ले मुझे, भाग 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 भाई, मेरे पे सारे भरे पड़े हैं भाई। हेलो 3 लौंडे मेरे पे ही हैं। वॉल भाई वो अकेले अंदर घुस गई भाई, वॉल बना के।
अपने अपना ये जो भी है उसका तो पता ही नहीं है, अलग ही है। समझ नहीं आया लेकिन सुन के अच्छा लगा। सही है भाई। नाइस नाइस भाई जीते कैसे? वाह भाई सारे किल चोरी हुए हैं पता है, मतलब किल चोरी इन द सेंस वो हुए हैं भाई। लड़ने तो भाई मेरे जाके स्ट्रीम पे चेक कर ले, रेना 52 टैग मैंने करी, ओमन को 26 टैग मैंने किया था, बट 78 टैग मैंने सेज को वो जेट को किया था। अब बोल किल चोरी किसे कहते हैं? मेरी किल चोरी नहीं थे तो और क्या थे? आधा तो मैंने टैग किया था रेना को, जेट को भी किया था मैं तो सेज को मार दिया ना। भाई उसके बाद ये बेंच तो कौन लूट रहा है और बहुत पिस्टल से मर गया भाई, लालत है मेरे पे भाई। No charges left. मार सारे। अरे बैंड जो क्या किल चुरा है। अच्छा वो सेज तू था जो बंद हो गई थी अपनी बॉल बना के। डूबड़ा गईगा भाई, क्या मर रहा था तू। ये बॉल बना के अंदर चला गया था मिड के। ओ भाई तो क्या हुआ भाई? वहाँ 3 वनडे थे और मैच तू ऐसे गैंगबैंग हो रहा था। ओ भाई अरे मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, टूट गया तो मैं क्या करूँ? भाई अब ये क्या कर रहा है भाई? इसका तो अलग ही नशा है। डिटेक्टिव नाइस पे नाइस स्पाई गिरी टीम वर्क असैसिनेशन सस्पिशन नीचे। भाई मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, सीरियसली नहीं समझ में आ रहा भाई। ऐसे 10 seconds left. इसकी पिंग किल चुराते वक्त ठीक थी, अभी जब मारने गया तो पिंग हाई होती है। लॉल एरी ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। पिंग तो भाई साहब भाई 56 हो गई। वाह भाई सही है भाई। साला अब भी हिला नहीं आ रहा साले। भाई 4 लोग हैं। गाने बंद ही करो भाई, मन नहीं कर रहा गाने सुनने का, बिना गाने कोई खेलेगा। मैं तो एकदम लो वॉइस करती है। ओके आई वाज व्लॉगिंग। तो अभी पता नहीं यहाँ पे किस बात की जंग वंग सी चल रही है। हमारे को स्नाइपर पकड़ा दी। क्या कह रहा है वे? अच्छा तो हमारे को यहाँ पे पता नहीं किसी ने गन पकड़ा दी है, ये अजीब सी स्नाइपर सी। लगता है हमारे को भी इनके साथ फाइट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। क्या बोले जा रहा है लुड़े? भाई व्लॉगिंग कर रहा हूँ साले, समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें? स्मोक कहाँ डालेगा? चूत के पत्ते स्मोक तो डाल। मार्शल यूज कर रहा हूँ चूतिए। स्नाइपर है तो भाई क्या स्मोक क्या कुछ। बैंक लोड़ा हमारे लिए करेगा। प्लांट कर चले चल करना मना। Cover going out. Stay in sight. I think it's a different map too. Like hello neighbor multiplayer, but we have to vote to eliminate him. Hello neighbor. अरे मारो भागो बोतड़ी वालों भाग लो। राम बेच रहा भाई चल भाई बहुत गंदा कर रहा है, बहुत ही गंदी एक्टिंग कर रहा है। ये फको Kick them when they're down. मैं गाने ही चला लूँ भाई, निक्सो की बकचोदी नहीं झेली आएगी। Oh yeah. भाई साला छक्का बन गया भाई। गाइस छक्का इन द हाउस। शिट यार स्ट्रीम पे You motherfucking homophobe. I'll get you to the jail. लॉल अंदर डरा दूंगा मैं जो सेक्स ऑफेंडर है तू साला।
भाई ठीक है ना भाई, सेक्स ऑफेंडर क्या हो गया इसमें? है तो है साले, गे लग रहा है तो लग रहा है भाई। हाँ ठीक है भाई, कोई बुरे बात मानने वाली बात थोड़ी ना है। भाई हेलो, व्हाट द फक, हाउ डिड आई मिस इट? यहाँ कैसे पढ़ा ये? यहाँ तो पढ़ना ही नहीं था ये तो। भाई ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पीछे भाई। अरे बैन क्लोडे कैसा स्मोक करता है भाई? ये क्या मेरे को धक्का कर रहा है? तू बता दे किधर करूं? कैसा स्मोक कर रहा है भाई? आधा बंदा स्मोक में बैठा पड़ा है कवर के अंदर। वाह भाई, तो तुम्हारे को नहीं दिख रहा साले, मेरी गलती है। तो बैन क्लोडे स्मोक के अंदर मेरे आंख जाएगी, आधा आदमी है भाई। उसने वॉल बना दी पीछे, तुम्हारे अंदर ये सेंस नहीं है कि भाई ठीक है भाई बंदा पीछे हो सकता है भाई। अब फिर उसके बाद मैं क्या ही बोलूं ना भाई, साइड घुसापन तो बंदा में दिखाएगा नहीं, स्मोक के अंदर रहेगा। आई एम ट्रेनिंग टू बी अ CS:GO प्रो। नाइस यार। ए चूतिया मारेगा भाई, लोड़ा है क्या भाई? सबसे बड़ा लोड़ा आर्यो झाटका बाल, अरे सॉरी, आर्यो झाटका बाल। झाटके बाल। I got your back. Just, you know, from the front. My झाटका बाल is more worth than yours. यही फके 0-3 क्या बोल रहा है साले? साढ़े क्या बोल रहा है? यही मारूंगा, यही मारूंगा छिनाल कहीं की चूत के पट्टे, यही मारूंगा, समझे क्या? 0-3 चल रहा है। तो क्या हो गया? पहले किल चोरी कर रहे हो भाई, किल चोरी हो रहे हैं मेरे, सारे के सारे किल चोरी हो रहे हैं मेरे। लड़ने किल चोरी, मार नहीं पा रहे बंदे, किल चोरी भाई ठीक है भाई, तो बोल तो सही। ओह तेरा भाई ओपी खेलता है बे, बोलो तो सही बे। खेल नहीं रहे होते तो बकचोदी ना दिया करो हमसे। जाओ मरो। बैन के लोड़े, मर गया। बैन चो तेरे से तो मारा नहीं है। कवर तो करता ना भाई, मैं तो स्मोक तो कर रहा था। बैन चो मैं पहले मारा ना बगड़ी के, तो कवर मेरे के स्मोक करना। अरे वो गलती से हो गया था ना वैसे। लॉल लॉल oops big oof nice try man लोड़े का नाइस ट्राई, लोड़े का नाइस ट्राई। We are Valorant. We are fighters. लैंड 1 2 4 चुप रहे तो साले भाई, खेलते नहीं है ना तो वो मजाक ना उड़ाया करो। ये वो खेल के दिखा देता भाई। अभी तुम्हारे को किल निकाल के दिखाता हूं साले। किल चाहिए ना तेरे को, किल निकाल के दिखाता हूं। साली रंडी पीछे पीछे चलती है। छिनैल छिनैल भोसड़ी के से ज्यादा किल है मेरे। हां तो अभी रुक ना, 2 सेकंड लगेंगे तेरे को पीछे हटने में। चल छिनैल पे ओ ये घुसना पे साले साइड में, किल्स के पीछे पड़ा हुआ है। और ये जोटिक मरता हुआ है। ऑपरेटर होती ना, मैं इनसे मार के बहुत अभी मर गया होता भाई। ठीक है भाई, भाई ऑपरेटर चाहिए थी यार, ये इससे नहीं होता भाई। ना शेडी गन है भाई, ये हेडशॉट थोड़ा मार लूंगा हर बार। भाई क्या नशे करके बैठा है बंदा? What the fuck with you gay fucks man? क्या गे? हेलो साले छिनैल। अरे टेको नहीं बोले लड़े, सक्सेस स्टोरी है भाई। इस छिनैल को मारो। ए फिनिक्स जाना बे, फिनिक्स गो क्लच इट यू नूब। नाइस मैच भाई 3v5 नाइस, इट्स गोना बी 3v5 because we are together. Don't forget. खेलेंगे बे, मजा आएगा। खेली तो रहे लड़े, क्या कहते हैं अपन का खेल रहा है, अपन तो बकचोदी खेल रहा है। मेरे को तेरे को रिवाइव करना चाहिए था, ब्लेड बनना चाहिए था तेरे को। मेरे को देना स्पाइक, गिव मी स्पाइक, गिव मी स्पाइक। आई मेल्ट, गिव यू स्पाइक, गिव मी स्पाइक ब्रो। Spike drop. Have the spike.
You will not kill my allies. अंदर घुस जाऊँ क्या साइड के? वैसे भी कुछ दिख नहीं रहा है भाई, क्या हगा रहा हो वहाँ बेंचो नूबड़े देखा स्पीकर है। ये वैन के लड़े चलने तुझे तेरे से बॉल बनाता ना, बॉल बनाता चूतिए। बनाता लड़ा मेरा बॉल बनाता है। बॉल बना के मेरे को रिवाइव करना था भाई। तो आऊंगा ना, हाथ आने दे साले, तू तो पूरे इतनी देर से खेल ही रहा है। कितने से खेल रहा अभी तो गेम ऑन कर है मैंने। कल इससे पहले भी खेल ही रहा था ना, मैं देखा था तेरे को। हाँ खेल रहा था। 2 कॉम्पी खेल के आया तू, मैंने देखा तेरे को। हाँ तो जबकि मैंने तेरे को मैसेज भी किया, मैंने मैसेज भी किया भाई आ जा। वो मैंने 8 बजे मैसेज देखा जब मैं गन बंद करके वापस खाना खा के विस्पर भी तो किया लोड़े, विस्पर भी तो किया, विस्पर भी किया। गेम का मैसेज नहीं देखता तो विस्पर पहनता है। व्हाट द फक, विस्पर किया भाई, विस्पर किया तो पहनने लग गया। वाह भाई, मतलब इतने नशे कहाँ से लाते हो भाई, इतने नशे कहाँ से? अरे मैं अपनी डॉट वाले क्रॉसहेयर पे वापस आ गया। तो मैं क्या करूँ बता रहा हूँ, जॉब छोड़ दूँ? हाँ छोड़ दे। वाह पाक नाइस। ओ लॉर्ड तेरे पे स्किन आ गई। ओ माय गॉड, थोड़े स्मोक क्यों नहीं करता है लॉर्ड? कहाँ के बचा के रखता है तू? भाई क्या करूँ, नहीं हो रहा है ना। कैटवॉक स्मोक करता है ना मिड स्मोक करता है, क्या लड़ना लौड़ा कर दिया। चलो तेरे को इतना टाइम कैसे मिलता है बैठा के शॉट लेने का? भाई टाइम बॉल तो बन गई है। तो पीछे आ गए लौंडे, पीछे आ रहा हूँ मैं। हाँ मैनेज कर लिया भाई, हेल्प नहीं थी भाई। भाई ठीक है भाई। भाई रुक जाना अभी थोड़ी देर, रुक तो जा, हाथ तो बिठा दे। कहाँ कुछ बोल रहे हैं यार, थोड़े कुछ बोल रहे हैं। हाँ साले सब कुछ बोल के बोल रहे हैं, कोरोना नहीं फैला रहा मैं। सारी बीमारी तो तूने फैला रखी है भाई। कोरोना कहाँ से आया? निक्स को लेकर आ गया। हाँ ये देखना भाई, अब मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, निक्स लेकर आया, सीधी बात है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ? पता, देखो इसे, देखो ध्यान से देखो गाइस, कौन लेकर आया है कोरोना? चूतिया मास्क कौन पहन रखा है? लैंड जैसा भाई, लैंड जैसा मास्क नहीं है भाई, ये चेहरा है मेरा, चेहरा है मेरा। और मास्क पहन भी रखा है तो तुम्हारे वजह से पहना है, ठीक है ना? तेरा चेहरा देख लो बोल भाई, कोई बता सकता है किसके वजह से मास्क पहना है मैंने? ओ भाई स्मोक थ्रू, ओहो मजा आ गया। अपन जरा प्लांट करना है। ये चूते को हील दिया फिर भी मर गया। भी आ जाओ। ओमेन गया उधर। ओ भाई मैं गया, मेरे को जल्दी जल्दी बैकअप चाहिए, ज्यादा देर होल्ड कर पाऊंगा। वो बहन के लोड़े कब आएगा? पुश चूतिए, गो पुश, गो पुश। नाइस भाई नूरा रन बीच रन 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 रन। अरे वो गाना होता है ना, ब्रर गया लॉल। ओ भाई सही है। नाइस मैन नाइस। भाई गन देगा क्या मेरे को? 100 पैसे दिख रहे थे को मेरे पे? जिन पे पैसा पड़ा है वो तो डिस्कनेक्टेड है। शॉटगन दिला दो भाई। Actually, nah. Never mind. But Among Us is scary. Among Us funny moment.
अबे रुक जा थोड़ी देर वेट कर ले, इसकी बर्फ निकलने दे, कोई मतलब नहीं है। अब पूछ ले। इसके ऑपरेटर में आने वाला हूँ भाई। नहीं यार, साले का बॉट मार गया भाई, इसके ऑपरेटर वरना मैं उठा रहा था। साले पीछे से ना मार दिया गेट तोड़ के। मार ऑपरेटर उठा जाके। बहुत उठा लिया तेरे भाई ने। इधर है। मेरे को बाई करेगा? मैं आज ऑपरेटर से आऊंगा, पता है नहीं भाई, क्यों बाई करूंगा, पैसा तो तेरे पे क्या लड़ना है अगले में बाई करूंगा ना, टेंशन पहले कोई ना भाई, करोना लेकर आया, इतना तो बनता है ना भाई। ठीक है भाई, भाई यहाँ पे आ गई वो। फक, मैं जंप कर रहा था बे, मेरे हाथ में गन नहीं थी बे। ऑपरेटर इतनी हैवी है ना। रिवाइव मी, फकिंग रिवाइव मी। जल्दी कर जल्दी। आई एम गोइंग, ओके बाय। अरे अबे मेरे को कहाँ देख रहा है, मैं बता। सॉरी यार, रिवाइव भी वेस्ट करा दिया चूतिए ने। ठीक है भाई, ठीक है। ये तो लंडी आदमी है सर, आप बोला ना मैं ऑपरेटर से थोड़ा आगे रहा, वैसे ही ले ली। Last round in the half. We cannot keep our goods after this. तेरे को चाहिए उसकी स्किन? इसकी पैसे ये नहीं तो क्या करेगा? अच्छा मांग को चाहिए तो तेरे मेरे पास 1700 है, कुछ चाहिए? अबे वो ले लेना, लास्ट राउंड है चूतिए। क्या ले लूं? मांग ना, स्पेक्टर ले ले एटलीस्ट। दे दे फिर। चल छोड़, वैंडल मिल गए। Last player standing. बैंड यहाँ, वाह भाई क्या पुश कर रहे हैं यहाँ स्मोक करके। Switching sides. बेंच तुम मिड देख रहे थे, क्या देख रहे थे? ग्राउंड में ना देखे भाई, उनसे पूछ मैं क्या करूँ, तू साले देखने गया था ना मिड तो। मिड थी तो उधर फिर लिंक देखने कौन गया था उधर? लिंक देखने कोई नहीं गया भाई, क्या लोडेड टीममेट है। वाह भाई, पहले 4 लौंडे हैं, 2 लौंडे मिड देखने जाओगे, अब लिंक भी हम देखेंगे। वाह, जो उधर एमएन कोई ना देखे, लिंक जो भी है अभी इधर अकेले ये पूरा देखना पड़ेगा। 3 लौंडों है तो खेल घुस रहे हैं हमें, दी जा रहे हैं लड़के। हाँ हक दिया मैं, ये बहुत बुरा है। एक शॉट पे बचा था चूतिया को जिसको हिल देता हूँ मैं थोड़ा मर जाता है। हाँ तो साले ऐसे हो जाता है, इमॉर्टल हो जाना चाहिए हैं।
player standing. देख इमॉर्टल का एम देख रहा है ये थोड़ा सा भागने का आधा आदमी भाई डैश मारना चूतिया डैश पड़ा इस पे भाई इसको खेला ही नहीं जा रहा है इसका तो बस की कुछ ही नहीं है मैं सरेंडर नहीं करेगा गांड मारा वेंचर खेलने नहीं आया मैं बकचोदी खेलना आया मेरे को घंटा नहीं पता अब मैं पुश करेगा बस मैं स्नाइप करेंगे भाई कैसे नहीं पड़ रही बहन के लोड़े को 10 शॉट दिए भाई ठीक है भाई मेरा एम क्या गंदा ऑडियंस एम नहीं पड़ा क्या भाई ऐसे कैसे मार सकता हूँ मुझे तो नहीं 2 हेडशॉट पड़ेंगे अगर शॉटगन से तो बंदा नहीं मरेगा वो भी इतने क्लोज रहेंगे भाई लालच है 4 ही बार मारना तो फिर तो मतलब वो ले लो मैं पिस्टल अरे बहन का लोड़ा what the fuck are you guys doing man Player standing. भाई इसके बस की तो कुछ भी आया नहीं भाई यही काम करता है ये जाएगा नजर देख के आएगा मतलब साइड देख के आएगा वापस आएगा यही काम कर रहा है इसने तब से लैंड एक तो मार ली और यहाँ कुछ लोगों में ऐड बढ़ गई या 3 थोड़े ज्यादा किल ले लिए तो किसको बोल रहा है तेरे को नहीं बोला मैं उसको बोला कह रहा हूँ मैं बट मैं तो मैं तेरे को नहीं बोला ना मैं तेरे को कह रहा हूँ अब देखियो साले टैप मारूंगा टैप हाँ लैंड टैप मार हो गया भाई तो कुछ पैसे ही नहीं आएगा क्या करें यही काम करना पड़ेगा मारते हैं आपको इधर वॉल पे उठा के पहले कितना बोरिंग काम है ऐसे बैठना वो आने भी वाले ना यहाँ इसके स्मोक से इसको घंटा कुछ नहीं पता चले एक बंदा किधर है आ रहे हैं लौंडे आ रहे हैं होली मदर भाई थोड़ा सा नीचे करना था काउंटर स्ट्रैपिंग तो कर एटलीस्ट यार खड़ा है ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक भाई क्या हगास कर रहा हूँ भाई नहीं कितना मैं यो अभी सरेंडर क्या लिखा है इसमें यो शोभा सरेंडर कमाओ put your recon dart there man put your recon dart there I'll fucking wall bang this guy होल्ड कर लियो ने ओ भाई क्या मारे लाशें बिछा दी तेरे भाई ने ओ यस सेक्सी तेरे सोपी बोलते अगेन डू दैट अगेन मैन डू दैट अगेन गॉड डेविल गेम प्ले
ओडिन ओपी बोलते बेंचो एरेस ओपी भाई 1 सेकंड वेंडल से मारा है मैं एरेस से मारा ना वॉल बैंग करके लो I will be their nightmare. अगेन अरे यार मैं यहाँ देख ही नहीं रहा था पॉकेट नहीं जा रहा था One enemy remaining. लास्ट वन एट ए अबे उसने वो डाली थी ना ओ ये इजी मेरी वेंडल उठाना जाके मैं उठा रहा हूँ हाँ तो उठाना रिक्वेस्ट कर लियो ना पैसे तो पड़े तो है रिक्वेस्ट कर लेंगे मैं तो भाई एरेस हो गए ठीक है दे रहा तो दे दे हट लड़े पैसे पर बाय कर ऐसे ही चले जाऊंगा चले जा मेरे को क्या हाँ हारोगे फिर बोलेगा दिल्ली लेगा ये रो रहा हूँ मैं लड्डू हाँ ठीक है भाई किधर कर रहा हूँ मैं इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बता Spike planted. वाह जी जी कोई लौड़ा यही नहीं देख रहा है भाई ऊपर देखना निक्सो से खत्म करना था देख तो रहा क्या कर रहा है कोई क्या ही बोले भाई वो भी कुछ नहीं सकता उसने प्लांट ऐसे करा भाई ए बंदे मर गए थे ना सारे मैच पॉइंट दीवार भी बना रखा था अरे वो दीवार की वजह से ही तो हुआ वरना तो मैं कर लेता डिफ्यूज वो जितनी देर में आधा तो करके रखता फिर उसके आधा बाद में कर लेता जेट को मार के फिर से ओडिन का चमत्कार दिखेगा अभी अगेन सोवा सारे भाई हैं सॉरी कोरोना हो गया क्या भाई ना मेरे को ऐसा एलर्जी है अच्छा तो मेरे को होते रहता Spike planted. अब मैं खुद को रिवाइव कैसे करूं बे One enemy remaining. Last player standing. भाई हेलो Attackers win. You will not kill my ally. चल इससे अच्छा तो ऊपर चले आता उसे ऊपर से मार लेता बॉल में करके आजा एक और खेलें शुरू करते हैं सागर भैया को बुलाते हैं डीमन को बुलाओ डीमन को अरे डीमन भैया खेल रहा है हेलो डीमन डीमन भैया आ जाओ वीसी आ जाओ वीसी आ जाओ डीमन भैया Time was precious. Love to waste time, whiskey and wine, drinking all night. Just drive, never arrive. Our journey was life, staying out late, testing
अरे फिर माइक कैसे खराब हो गया? जीवन भाई का माइक ही खराब होता रहता है। अलग से माइक ले रखा है क्या? पता नहीं। माइक कैसे खराब हो जाता है? ईयरफोन जो यूज कर रहा था उसका एक साइड खराब हो गया। उसका एक साइड खराब हो गया तो पुराने वाले यूज कर रहा हूँ। नए ऑर्डर किए हैं। भाई तू भी ईयरफोन पे खेलता है? फोन में? हाँ। मेरे पास हेडफोन नहीं है। फोन बाई करने जाओगे 4000 के हेडफोन। मेरे 2.5 के हैं। कौन से? अरे देख भाई, मेरा सिंपल सा है, लूंगा तो लूंगा लॉजिटेक हाइपर एक्स का ऐसे ही चूतिया नहीं वाला। भाई चूतिया उतिया क्या, 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। नहीं मतलब मेरे को लेना है हाइपर एक्स लेना। पैसा सेव करेगा, अपना जॉब में पैसे देंगे। घर वाले को बोल के दिखा, तेरे तो मिल गया ना मेरे को, मैं घर आके बोले देख मम्मी गेमिंग हेडफोन चाहिए। भाई तो बर्थडे पे ले लिया कर ना, बर्थडे गिफ्ट के तौर पे लिया कर। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। 10 साल से मेरे को बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला, चल चुप कर। जो गिफ्ट मिलता है वो बाहर वाले देते हैं, घर वाले मेरे को भी नहीं मिलता ऐसे। मैं तो बोलता हूँ बर्थडे गिफ्ट के नाम का दे दो, ऐसे दे देता हूँ। जब मन करता है ना तब खोल देता हूँ ये चीज। और मोस्टली हेडफोन्स के पार हो गया मेरा। मैं यूजुअली ना हर साल एक हेडफोन लेता हूँ, पर इस साल मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरा हेडफोन एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है अभी भी। बाइंड आया ले ले। साइफर खेलेगा तू? कैसे खेलेगा? क्या खेलूं बता? किलजॉय है क्या? किलजॉय भी सेंटिनल है। ओके चलो करते हैं। चल तो ओमन ले गया। FPS 144। ओके अभी तो लोडिंग अभी देखते हैं। क्लाइंट FPS कितना दे रहा है तेरा? क्लाइंट FPS ही तो बता रहा हूँ 144 फिक्स है ये बोल रहा है। नहीं हिलता रह रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो 100 से नीचे नहीं जा रहा अभी तो। पर आजकल FPS कम जा रहे हैं, मतलब अभी सुबह तो जा रहा था, दोपहर वगैरह सुबह दोपहर में। Another raise? गेम का साइज बढ़ रहा है धीरे धीरे। I mean, still kill her. अभी 90 के आसपास आ रहे हैं, 90-100। मेरे 100 अराउंड 100 वही सबके उतने ही आते रहे। हाई एवरेज पे बस डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का अलग से ले ले, कोई मजा आता। भाई यार मेरी पहले 1080p वो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले थी यार, तब मजा। अभी जब परमानेंटली पापा लोग शिफ्ट कर जाएंगे ना तो अपने घर पे लगवा लूंगा, रख लूंगा मैं सेटअप बनवा के। यार एक मॉनिटर चाहिए भाई। मैं भी वही कहने वाला, अलग से रूम रहेगा मेरा। पहले साल में 2 ही बार आऊँ। अबे मेन बात वही है ना, मैं होता नहीं हूँ, मेन चीज यही तो दिक्कत है। Bitch, what the fuck? लेमन भैया हमको पुश करते रहेंगे। Who the fuck is it, man? Give me fucking heal. अबे ये क्या अपने, वाह भाई ठीक है भाई। ये कब के कब आया पता ही नहीं लगा। I was thinking ये मेरा था। अजीब सी थी। I wasn't sure anything.
What are you saying? What are you talking about? Hello? Hello, mate. Can you hear me? I'm Can you hear saving. me, mate? Okay. I'm saving. अच्छा वो तोड़ रहे क्या? Okay. Hasn't loaded again. Behind, mid. Omen mid. पता है मुझे. लेफ्ट में आ गया तेरे. जल्द तक दिखला हो जाएगा. प्लांट. You're stubborn. झलक दिखला जा, ओ झलक दिखला जा, एक बार आजा. चुप कर जा. क्यों करूँ मैं? एक बार आजा. दिखा भी इसको रहा. मुंह में दे रहे कोई. Shake him up. टट्टे ला दूँ तेरे. ए चाइनीज और टट्टे चाटेगा मेरे बंदर पर. टट्टे लेके घूमती है भाई ये. तेरे भाई मेरे पास ये 2 टट्टे हैं भाई मिला के, कुल मिला के. ये पता नहीं इतने सारे कहाँ से लाती थी. नहीं है. लॉल. बहन की चूत यहीं नीचे बैठा पड़ा है. मुझे लगा ये ऊपर नहीं आया. क्या सागर ब्रो बताओ. इतने लेट कैसे हो जाते हो? भाई आवाज तो प्रैक्टिस में तो पता ही नहीं चलता. इनवाइट भी भेजा. ओके सर. ठीक है सर. अरे यार. One enemy remaining. Oh yeah. I know what must be done. भाई निकलो क्या हो गया ब्रो? देख रहे हो टॉप फ्रैग निकल गया तुम्हारा. साल हम भी दौड़ रहे थे. क्या हो गया? एक गेम में तुम्हारा टॉप फ्रैग निकल गया. स्पेक्टर से टॉप फ्रैग करूँगा. स्पेक्टर से. Bomb buddy out. नहीं कहीं हो सकता है उसका वो. वगैरह. भाई सब डैमेज. भाई 130 है गया यार. ये 100 तुमने दिया सपोर्ट. No charges left. अब उनको सपोर्ट क्या नहीं कर रहा? सपोर्ट किया था उनको सपोर्ट. Last player standing. Fire in the hole. लॉल. अरे नाइस. क्या बात है. नाइस वन. पॉइंट अपने को मिलेगा. Stay taut as a bowstring. The fight demands it.
इजी पॉइंट बॉयज। ये डीमन भाई अपनी गांड से दिखा रहा है मेरे को। चल गया। मसाले उड़ रहे हैं और क्या, तुमने दो मसाले एक साथ उड़ाए। Fountain. Get in the side, motherfucker! Spike planted. Satchel out. एल्बो देख रहा है ना कोई? One enemy remaining. पता लग तो पीछे से आके पेल गया मेरे को। Healing you. Oh yeah, let's go. I'm trying to stay serious here, but this is just so much fun. हाय फैल्कन, बिग फैन सर। नाइस भाई, ठीक है भाई। फैल्कन आओगे क्या तुम? वीसी ज्वाइन करो ना बे, सर्वर हमारा लिंक पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में, आ जाओ फट। उड़े रे गुलाल, उड़े उड़े रे गुलाल। वेटिंग लॉबी में बैठो, रिएक्ट कर लेंगे, कल तक तुम्हारे को रोल दे देंगे। छोड़ो बे, ऐसे नेट बर्बाद हो जाएगा। मन तो कर रहा है चले जाओ। चलो Bomb buddy out. Enemy spotted. हग दिया बहन चोद। दौड़ के नहीं बैठा था। ओमन इज हियर, ट्रेसपासर। Player standing. वाओ, वाडू है नशेड़ी। क्या कर रहा है? क्यों अल्टी वेस्ट कर रहा है? तेरे पास स्पाइक नहीं है चूतिए भाई। 30 seconds left. इतना पैसा है, गन सेव करके भी क्या उखाड़ लेगा तू? हरामी 100 के भैया दो सर हमारी 100 क्यूरा करवा तो सर क्या? अच्छा हमारे 100 करवा दो सर, थोड़ी सी प्रमोशन कर दो सर। भाई प्रमोशन तुम देखो ना, कितने लोग देख रहे हैं? 2 लोग देख रहे हैं तुमको मिला के, और एक मैं देख रहा हूँ। और मेरे पास 2 चैनल है, दोनों से सब्सक्राइब कर रखा है। एक से मैं देखता हूँ, एक से स्ट्रीम करता हूँ। Stand tall. We are Valorant. We are fighters. कितने सब्सक्राइबर की जरूरत है ये बताओ पहले। 2 की चाहिए तो बताओ, 2 करवा सकते हैं अभी। पाँच चाहिए, 5 करवा दो, 2 करवा देते हैं। निक्सो हेलो बोलेगा साले? हाँ साले, सब्सक्राइब कर नहीं सकते लोगों को, दोस्तों को नहीं कर सकते। Enemy spotted. Bomb buddy out. Enemy spotted. Spike planted.
should run. Wait for it. Last player standing. नहीं 6 चाहिए भाई, बहुत बड़ी। 3 या 4 सब्सक्राइबर मैं फेक अकाउंट से करवा सकता हूँ, चाहिए तो बताओ, पर मैं बताऊंगा फेक अकाउंट फालतूगिरी होते हैं। You say something? Sorry. अब मेरे भी 400 होने वाले, मैं किसी को फेक अकाउंट से सब्सक्राइबर करने के लिए नहीं कहूँगा, समझ रहे हो? क्योंकि फेक सब्सक्राइबर आर फकिंग बैड थिंग। क्योंकि आप अपन बात की डीमन भैया, एक मेरे दोस्त का चैनल अगर मन करे तो चेकआउट कर लेना, और सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, AR फैल्कन के नाम से। इंग्लिश Okay. There they are. चल अब भी आके मुझसे No more. Spike carrier down. Last player standing. ही खेल रहा हूँ, दिमाग में कुछ चल रहा था, मैं सोच रहा था कैसे करूँ। कैन आई सेव दैट ऑपरेटर, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था पूरे समय कि ऑपरेटर सेव कैसे करूँ, ऑपरेटर सेव कैसे करूँ। अबे निक्सो क्या हो गया भिखारी? भाई निक्सो चला गया, निक्सो डिस्कनेक्टेड, व्हाट द फक। अभी नोटिस किया, आज मन नहीं है वेलो का। ओके भाई नहीं यार, Go get it. भाई वाह, टाइम आउट लियो पीछे गेम। डीमन भाई ऑपरेटर उठाओ, सेव कर लो, निकल जाओ, सेव कर लो, मत करो। एस कर सकते हो वैसे, फिर आप स्पॉन पे और ये पुश करते हैं, मजा आ जाएगा। अरे अल्टी ओह शिट यार, अल्टी यूज करते एस होता। Look at me. I know that I am by your side. ऐसा क्यों कर रहे हो बे? टाइम आउट मत। अबे सुन फैल्कन, या तो तू पीसी गेम्स कर या फिर तू वो कर, समझ रहा है, मोबाइल गेम्स, क्योंकि तेरी ऑडियंस उस हिसाब से बनेगी। बहुत नाइस चला हमारा डॉक्टर, क्या कमाल का हमारा आईपी वाला यार। भाई बात मानेगा तो मैं तो ये कहूँगा कि एक ही चीज़ कर, या तो फ़ोन कर या फिर मोबाइल कर। ये जो तू पबजी मोबाइल करता है ना, बीच में मत करा कर, ऑडियंस उस हिसाब से बनती है। फोन कर मोबाइल करवाता सब। अरे यार भाई वो बंदा स्ट्रीम कर रहा है, मेरा दोस्त है, तो उसे कह रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक चीज़ कर, या तो मोबाइल स्ट्रीम कर, मोबाइल की गेम स्ट्रीम कर, या फिर फ़ोन की कर। मोबाइल की कर, फोन की कर। अबे मतलब मोबाइल की कर या पीसी की कर, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अगर तुम दो अलग अलग वो करोगे ना। अबे मैं गलती से साइड उधर आ गया, टेलीपोर्ट हो गया। अरे मार जो ना प्रॉपर्टी आईपी वाले को सब मार इधर ही प्लांट कर रहा हूँ। देखो किधर देगा टाइम आउट लाइक
भाई ठीक है भाई, मेरे को लगा उसके वो पड़े होंगे किल जो है, दैट्स व्हाई मैंने प्लांट किया। भाई क्या नशेड़ी है क्या भाई ये? 30 seconds left. I have the Sorry. अच्छा डीमन भाई था पीछे। ओ अच्छा ऐसा क्या? last player standing. नहीं बे नहीं नहीं, use your eyes fucking guys। क्या भाई इसे आईज समझाओ ना कि कैसे यूज करते हैं भाई, what the fuck। फैल्कन तुम देख रहे हो क्या? तुमसे ही बोलने हैं भाई। पीछे पाउच, कितना छोटा सा पाउच क्यों लेके घूमती है फॉर्मेलिटी के लिए? रीलोडिंग। चलो मेरे को लगा 5-6 और 6 सब्सक्राइबर चाहिए ना, तो फिर जा भाई वो कर ले, क्या कहते हैं, सीओसी की स्ट्रीम कर लो। बट वही है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरे सीओसी से अगर सब्सक्राइबर बढ़ते भी हैं तो एक चीज़ है कि उसके व्यूअर्स मैं ये जानता हूँ कि वो लोग नहीं देखने आते। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन आ जाएंगे, 2 दिन आ जाएंगे देखने, फिर उन्हें पता लग जाएगा कि अच्छा ये तो बंदा सीओसी कर ही नहीं रहा है, ये तो रोज़ कर ही नहीं रहा है, तो फिर छोड़ देंगे। और वैसे भी वो लोग भी सीओसी इतना नहीं खेलते, तो उन्हें कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा, नहीं आते कि पुरानी यादें ताज़ा करवा रहा है लौंडा। चले जाते हैं, देखें क्या करता है। सोच रहा हूँ अल्टी यूज कर दूँ। प्लांट करना। पहला मौका तो यूज करूँगा। हील चाहिए। हीलर जिंदा रहेगा तब तो हील मिलेगा देखो। पता है मुझे। One enemy remaining. हीलर उनका जिंदा है ना, वो इधर से आएगा लॉन्ग से। I'm still here, amigo. Last round before the switch. Buy all you need. गोल्डी कहता है कि उसे लोग सपोर्ट करते हैं जो सीओसी देखने आते हैं, बट मैं उसे सही बताऊं ना, अनलर्न करते हैं भाई, कोई ना आता वापस देखने। आने तो पबजी मोबाइल वाले की चीज़ हिसाब से कि लोग सपोर्ट करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, घंटा कोई नहीं करता सपोर्ट में मोबाइल वाला। सब्सक्राइब करे छोड़ देते हैं बस। अबे भाई जो देखता है, जो जिस चीज़ की ऑडियंस है वो है, सीधी बात, खत्म कर। तुम किसी को क्रिटिसाइज ना करो, खत्म बात। जो जिस चीज़ की ऑडियंस है वो है। अबे वहाँ उसका अलार्म बॉट है, बच के रहियो। क्या हो गया? कहीं वो जला दे अपना, समझ रहे हैं ना? $78 टैग है, साइड में बैठी कोने में, ऊपर बॉट को मार। One enemy remaining. Sage, it's the last round. Revive me. Last round है, last round है, revive. Your duty is not over. Here comes the party. Satchel out. Satchel out. Paint. Switching sides. Charges. Check. Brakes. Nowhere in sight. Right here.
Time to explode. Go get him. ओह मैं उधर क्यों नहीं था भाई। नेड बैठता सबके सब मरते या फिर टैग होते। Spike planted. Satchel up. Last player standing. क्या है भाई जो नेटवर्क मेरा 100-200 पिंग दे रहा है लड़ा ये लोग भाई ले आता है बंदे को भाई क्या भाई हाई एवरेज पिंग लेने मेरा मतलब चाहिए तो वाईफाई आधे राउंड तक तो ऐसे ही पे पड़ा था क्या है भाई क्या 3A2B वही कर रहे भैया। वाह भाई मैं अकेला भी तो है। Bomb buddy out. It must be है। Right here. Multiple enemies. Spike. भाई वाह भाई ठीक है भाई। One enemy remaining. ओमन had be probably मेरे को मिड में मिला था। ओके भाई पे दिस अगेन स्पॉटेड आउट कर दी। अब उसके पास नहीं है अभी 4 सेकंड रुक। I don't have heal yet. For you. 30 seconds left. जाना बीजा 100 जाना हील हो गया पूरा बीजा बूदा है तो बीजा जाने था पेन 10 seconds left. कहाँ चिपके बैठा है मादर चोद गाली कर बूदा है तो रिवाइव करके दिखा लगड़ा कहाँ चिपके बैठा है नहीं है ना बूदा बस इधर स्पॉन में मादर चोद अरे साला आवाज आ गई थी बूदे का लोड़े तुम अपने स्पॉन में जाके बैठा है उसको कहाँ से मारोगे क्या साला कूदा नहीं बूदा ऑपरेटर दिला दे लंड ना दिला रहा मैं कुछ चुपचाप रह भी डेमन के पास ऑलरेडी ऑपरेटर है तो एक साइड पे एक ऑपरेटर रहता है दैट्स अ डील भाई खुजली हो रही है ओ ये मर गया लोड़ा पीक मत लेना इतना गहरा Spike spotted. One enemy remaining. भाई किल चोरी पे चोरी कर रहा है बंदा मैं इसको मार डालूंगा Satchel out. वो वैन का लोड़ा फिर से स्पॉन में जाके बैठ गया हट साली रंडी छिनैल तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा यहाँ नहीं है बे लोड़ा यहाँ है बोल तेरा जा मार भाई के वहाँ पे अभी क्या टट्टी है सारा तू
स्पाइक है वहाँ पे, स्पाइक उठा के जाएगा। वाह भाई कितना टैग करूँ? लॉल भाई ठीक है भाई, सब ले लो किल, यही काम बचा है मेरा। भाई मैंने 3 लोगों को टैग किया भाई, 3 लोगों को टैग किया। कितना कितना टैग किया? 117 ओमन, ठीक है 10 रेना हुई थी, बट मैंने वो क्या कहते हैं किल जॉय को 102 असिस्ट है, ठीक है 41 तेरा सेज को टैग किया, 195 पे तो किल लिया था उसको, प्रेम को 2 को टैग किया, 2 किल चोरी हुए। नाइस भाई नाइस, 8 असिस्ट हैं, देख रहे हैं मेरे पूरे गेम में। भाई रेस का ना ये होता है, असिस्ट ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा। किल निकालो, डैमेज तो बहुत भी देता है भाई। असिस्ट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसके एबिलिटीज असिस्ट ज्यादा करती है। भाई बी आ जाओ, वही मेरे को लग रहा है बी है ही। No chance. भाई मैं गया, आई एम डन। मेरे को दिखे नहीं भाई किधर गए। समार चूती गया, स्मोक कर रहा था बे मैं तो वही तो बे चूती है, वहाँ पे है ना एक और। Last player standing. और तुम स्मोक खेल ले। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक हो गए, समझते हो कि नहीं? चले गए, चले गए वो। जाएंगे कहाँ लौड़े? ए पे मेरा टाइम बचेगा तब भी। कहाँ गए हैं देख? 10 seconds left. One enemy remaining. टाइम वेस्ट है बहुत ज़्यादा। ओह ये अरे ऑफ एस नहीं हो पाया, किसका एस नहीं उठा पाया। अरे मेरे को अब देगा क्या? 100 अब देना, मैं तेरे को गन दे देगा पक्का। ओए डेमन देखो ऑफ चाहिए, ऑफ दे साले, मेरे को दे भाई। धोखा मैं पिस्टल लेके चले जाऊंगा। चले जा, अपने को क्या है। गाइस मैं रो रहा हूँ भाई साइड में बैठ के, मैं नहीं खेल रहा भाई इनके साथ। ये धोखेबाजी देख रहे हो इनकी। बट ठीक है भाई, अब तू मांगियो ड्रॉप, फिर बताता हूँ। मैं मांगूंगा ही नहीं साले, अल्ट यूज करता हूँ अभी, रुक तेरे पे। मर गया रोटिक, पिस्टल से गया था ना मैं। Captain kill. Revealing area. Found them. मैं डीमन की जगह होता ना, एस मार रहा होता। पर नहीं, तूने डीमन को ज्यादा वर्दी समझा ऑप के लिए। Last player standing. अब मांगियो तू साड़ी छिनैल गई। Spike planted. मैं डीमन की जगह होता ना, सेव कर रहा होता। मैंने तुमसे कुछ नहीं भी पूछा तो चुप कर। चल Your opinion does not matter, लोड़े। क्या? चुप कर। Revealing area. लौला ले लो, लौला। लौल दो तो पीछे से आया। Silence. देखा मैं कर रहा था तो हो जाता ये। हाँ लैंड होता तुमसे, पर ऐसे तो मर नहीं, तुमसे बंदे बड़ा ऑफ चला के मारोगे। मार भाई, तो ऐसे नहीं मरेंगे तो ऑफ से तो मरेंगे। आज तेरे वजह से मेरे पास पैसा नहीं है भाई निक्सो, ठीक है भाई। हाँ ठीक है चल। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा भाई, इंचो मैं अकेले साइड संभालूँ हैं, तुम मजे ले लो भाई, ठीक है भाई। जा रंडी होना कर, उधर जा भाई।
गान मरो गान, गा मरा लो गा। अच्छा तुझे नहीं पता ना ये चीज़, तो मैं तुझे बता रहा हूँ। ये कौन सा सुधार है? It's a my hostel thing. तेरे हॉस्टल में सारे चूते ही भरे पड़े क्या? अबे वो चूतिया है, एक बंदा गाँ बोलता है, गाँ गाँ मरा लो, तो हम उसका मजाक उड़ाने के लिए हर जगह गाँ मरा लो बोलते हैं। कौन चूतिया मेरा? ठीक है साली रेडी चिनेल, मैं जा रहा हूँ इसके बाद भाई, मैं इतना बुली नहीं हो सकता। You should run. मैं भी जाऊंगा भाई, मेरे को भी सोना है। नहीं तेरे को सोना नहीं, तेरे को चिनेल करती करती है। हाँ चिनेल। क्या डी में क्या? इससे अच्छा मेरे को देता, मैं भूलूंगा नहीं निक्सो। उसने मांगी तक नहीं थी। 30 seconds left. खुद से स्नाइपिंग होती नहीं तो दूसरों को भी नहीं करने देगा। One go B through as fuck। नहीं जरूरत, कोई भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं जाएगा, कोई जरूरत नहीं है भी जाने की। Look for my shadows, they will hide you. ले जॉटी किधर है तू? चल बे, मेरे को देगा नहीं, मुझे पता है ना सर। मैं तो जा रहा हूँ पिस्टल के साथ। I need this. Thank you. देख रहे हो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो ऑफ कोर्स ना, तू ऑपरेटर किसी को देगा तो साले वो तेरे को देगा ही, उसकी इकोनॉमी अच्छी हो रखी है पहले से ही, क्योंकि तूने एक बार ऑपरेटर दी उसे। Prepare for hellfire. क्या बचा बे मैं? For you. Spike planted. Okay. Enemy spotted. Satchel out. Here comes the party. Imposter killed. ये भी सही है, मुझे पता ही नहीं लगा मैं किस चीज के ऊपर खड़ा हूँ। अबे क्या लोड़ा सिंह है हमारे, तो से रह सकता है। Player standing. ये बेंचोद क्या पिंग है? हाँ क्या मेरा इसकी वाले बड़वे मारे थोड़ी नंबर ऐसे नेटवर्क नहीं दे सकते भाई। देख रहे 150 पिंग आ रही है मारे, तो कैसे खेलूं मैं इसे? दूसरों गने बांट के, मेरे पे तो है पैसे भाई, तो बांटो ना फिर। लैंड ले लो तुम ले लो। इकोनॉमी मेंटेन करनी आती नहीं बढ़िया खेलने वाले। हाँ साले, तुमने किल निकाले हैं, जो इकोनॉमी तेरी ज्यादा होगी मेरी होगी, बता इकोनॉमी मेंटेन करने वाली बात कैसे? तुमने रेंडिनो ने क्या कर रहा है? हाँ तो मैंने रेंडिनो ने क्या किया, तेरे को कुछ कहा थोड़ी, तू ही आके तो बोल रहा है, तू ही रो रहा है, तो बोल रहा है, तू ही रो रहा है। तुमसे खेला नहीं जाता जितना नेटवर्क मिले भाई, नेटवर्क ठीक करो अपना, फिर रो क्यों रहे हो? हाँ वो तो देख ही रहे हैं, जिसका पिंग है कम है वो खेल रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, तुम अपना नेटवर्क ठीक करो, रो क्यों रहे हो? हम कहाँ रो रहे? इसे रोना नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे हसन? Satchel out. One enemy remaining. I'm still here, amigo. Your duty is not over. वाह हाँ भाई क्या वेस्ट कर रहा है लोल, क्या वेस्ट कर रहा है एलटी। ओपी भाई,
Just caught in the moment, you know. Wow. Okay, bruh. भाई वो बहुत सही. It's too easy for me, man. भाई नहीं यार. मेरे को हील चाहिए होगा. One enemy remaining. तो वो क्यों नहीं हो पा रही? अपनी से इतनी नोबड़ी क्यों है? भैंसों मर क्यों जाती है हर बार? Match point. लोड़े क्या बोला था फर्स्ट हाफ में? हाँ तो ठीक है ना भाई, गांड मराओगे तो. हाँ साले दिन की बात होती है बे. बहुत दिनों से गेम नहीं चल रहा है मेरा, मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा. ठीक है हाँ हाँ ठीक है चलो ठीक है. अभी मैं भी हार के आया था लास्ट मैच के ऊपर. Can someone get this? तो रंडीरों ने मत करना सामने. हाँ चल भाई ठीक है. वो हार के आया तो इसका क्या मतलब होता है? तो मैं भी खराब खेल रहा था ना, तभी तो हार अबे गया. तो एक दिन खराब खेलने से जाके मेरी स्ट्रीम देख जाके. तो कितने दिनों से खराब खेल रहा हूँ? खराब हो रखा है मेरा 3 दिन से गेम. वहीं गया वो भी. ये लोड़ा ऑफ देख आ जाएगा मेरे को पक्का है. Okay. Enemy spotted. भाई ठीक है भाई. नीचे से मार गया वो मन. Spike planted. Last player हाँ ब्रो standing. ठीक है. क्राउच कर जाओ तब भी सिर पे गोली लग जाती है. Save your fucking weapon, man. Don't go. Save your hope. That's right. पैसे हैं भाई. पैसे लोड़े. मैं क्या करूँ? सीखना होगा टट्टी तो मेरे तो है. जो चाहूँ वो ले लूँ. तेरे भी कुछ खास नहीं है. इतने हैं मेरे पास, जो चाहूँ वो ले लूँ भाई. आखिरी राउंड है इसका. अरे आए तुम अभी भी हो? कहाँ से आ गए तुम? सोए नहीं अभी तक? कल क्लास नहीं है तुम्हारी? हैं बच्चे? कौन है? मरिया लोड़ा शेर भी नहीं है. तो बच गया भाई. कौन सा ही ऐसे? शेर. ओ भाई देखते हैं भाई. ऐसी चीज कैसी देख के तो मजा सी आ गई भाई. कुछ चाहिए गरीब? नॉप्स. फुल बाय. Let's go. फुल बाय कर रहा है. फुल बाय कर रहा है बोला चुकिए. Bomb buddy out. भाई पिंग. ओ माय गॉड क्या है? अभी पिंग का जल्दी है, तेरे को पता चला है? हो गए भाई सही. ध्यान में रहो. Right here. एक्सोटिक है क्या वहाँ पे? नहीं है ना, कोई दिखा नहीं अभी तक. ओके बी तो में आवाज स्मोक भी हो नहीं गया. आई. अच्छा गोस्ट है तो एरिका. ठीक है नहीं आ रहे. आई You will not kill my allies. Right. पता था यहाँ पे बट 30 seconds left. दूर है. गया बे. चूतिए पीछे देख तो सही. पीछे रश कर रहा है वो बंदा. वो तब भी There they are. Last player standing.
नहीं ठीक है भाई, देख लेते, ठीक है, हेडशॉट पे लगा लेकिन बॉडी शॉट दिखाएगा नहीं। Let them try to get through me. ओके मेरी इकोनॉमी खत्म। अरे ये क्या था बे? डकार कहते हैं इसे। अच्छा वैसे इसके बाद तो वो है ना, अल्टी वल्टी यूज कर लूंगा सारी चीजें। अबे लैंड में वन टाइप के चक्कर में मार नहीं पाया बनने का, तो मार देता है। उसमें भी हमारी गलती। हमने कुछ बोला तुमको? छूते बट्टा है, सब चीज अपनी गांड में घुटती लेने रहता है। Enemy spotted. There they are. Multiple enemies. बाय, गुड नाइट ब्रो। लॉटी क्लच करेंगे, स्मोक कर दूं। अबे यार क्यों के चक्कर में भैंचोद मर गया, मेरा खराब हुआ। 4 खेलते क्या यार, 4 ये करीब 5 हो सकते हैं। क्या नाम तेरा? डेमन, तू गार्डन देख, मैं देख रहा हूँ। 30 seconds left. You shot wrong. Enemy spotted. इसको मार दूं तो भाई पावर खत्म है। अरे बहन भाई गधा, एक नंबर का गधा। किसी को मार भी नहीं रहा था भाई, तो पीछे तो जाता। Sudden death. My power does not ebb. Ask for aid and you shall receive. हो गया भाई, हो गया। एंड गेम है, व्हाट द फक। हाँ लास्ट में ना, लास्ट राउंड। अच्छा अनरेटेड है ना, इसमें ये नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? गलिया बुलबा गलिया। भाई उसको बाय इतना करना है सीरीज में। Let's make him dance. Okay. सॉरी। अरे सॉरी। वो रोटेट कर रहे हैं, they were rotating B। क्या बोल रहा? they are rotating, they were rotating। वही बोलने वाला था बट निकल गया ना भाई मुंह से। Got their own. बस सब आ गए क्या? Let's go back। मैं जा रहा हूँ, बस एक किल और। 30 seconds left. Lamps। Enemy spotted. Enemy spotted. Disappear. I see the spike. One enemy remaining. शिट यार, एक किल मिलते ही हो गया यार, अल्ट रेडी हुआ था मेरा। 10 seconds left. अबे पीछे देख निक्सो, पीछे से आएगा वो, उधर से गली से। ठीक है लोड़े गली से आएगा। मैं तो गली में ही घुसा ना, वो क्या करूँ, इधर से आ गया तो। सेंस लगाते हैं लोग भाई अपनी, सेंस लगाते हैं। देख लोड उधर देखने बोलता है, चलो भाई। अबे तो लोग उधर से ही आते हैं ना यूजुअली। तुम चुप कर लो भोसड़ी वाले टट्टे। इन दो ने तुमसे वो तुमसे ज्यादा काम ना मेरे झाट के बाल कहते हैं, ठीक है ना? बहस ना करना मुझसे।
हाँ ठीक है। ये टॉक्सिक करवा देते हो यार तुम भी ना कतई स्ट्रीम को। स्टार्ट तुम ही करते हो, हम थोड़ी करते। भाई मैंने क्या टॉक्सिसिटी करी है भाई? चलो हम भी जा ही रहे हैं डीमन भैया, चलो निकलते हैं। ओके तुम्हारा गाइस, ये तो आज की स्ट्रीम बस इतनी थी। थैंक ये यू जो तुम्हारा बॉर्डर कैसे मिल गया? मैं देखो इसमें पीस आउट। कौन सा बॉर्डर? तेरा सिटी रैंक वाला बॉर्डर। कौन तेरा सा? मेरा तो एक भी बॉर्डर अनलॉक नहीं हुआ अभी तक। कितने ये मैचेस खेलता है तू? रेना का वो कह रहा है क्या बैकग्राउंड? अबे नहीं बे, तू कैरियर में जा अपने। अच्छा हाँ। नहीं अरे लोल मेरा हो रखा है ऐसा। मैं सोचा क्या अरे चीज? मैं समझा नहीं, क्या चीज कह रहा है तू? अरे वो जैसे एसीटी रैंक दिखता है ना, ठीक? तू मेरे करियर में जा, तू मेरे करियर हाँ में हाँ जा। तो जैसे तेरा दिख रहा है ना, तेरा लेफ्ट साइड में एसीटी रैंक, हाँ हाँ उसके ऊपर बॉर्डर सिंपल सा है तेरा। हाँ। और तू मेरा करियर खोल। सिल्वर ही तो है, सिल्वर कलर का ही दिख रहा है, मेरे में बोल, भी दिख रहा है। तो ये किसका दिखा रहा था अभी तो? अबे तो सिल्वर कलर का तो मेरे हिसाब से इसलिए दिखता है ना कि वो सिल्वर पे है बंदा। नहीं वो तो डी अभी गोल्ड 3 किसका दिखा रहा था तो बे? वो डीमन होगा बे। ओके लोल। डीमन होगा भाई, डीमन जाता है गोल्ड पे, हम ना जाते हैं।